Okay. So in our previous lecture, we were talking about the literary sources, है ना? और literary sources में हमने कौन से sources cover कर लिए थे? What types of sources? The secular, the literary, sorry, religious sources that we had covered, right? Now, before we move along, somebody asked in the group yesterday, Telegram group पर, that how to make synopsis notes, short notes for every lecture. ठीक है? तो I'll walk you through the process, the mental process that must be applied for this note making. ठीक है? So first thing, you go back home. What is the first piece of material that you should pick up? The PYQ booklet. ठीक है? What should you do with this PYQ booklet? क्या करना चाहिए? Should you cover all the questions from that unit, or specifically those questions which are covering those themes which are covered in that day's class? Specifically those questions that are pertaining to that day's class. Focus on those questions pertinent to today's class. Second thing, what to emphasize upon when you are reading these questions? Should you start brainstorming various arguments, try to recall facts from the class, या फिर कुछ और चीज पे फोकस होना चाहिए यहाँ पर? Only one thing, that is highlight the key demands of these questions so that in your mind you are preparing a demand tree, a demand chart. ठीक है? तो analyze the PYQs to prepare a mind map populated by the key demands of these questions. So through these two steps, what you're actually doing is applying the PYQ lens to your analysis. एक बार PYQ का चश्मा पहन लिया है, अब उस चश्मे के थ्रू क्या पढ़ना है आपको? The notes, the class notes, handouts, etc. that you need to go through. ठीक है? Now, through this lens, revise today's topics, and while you are doing it, तो आपको emphasize किस चीज पे करना चाहिए? Should you be focusing on the facts or more on arguments which will help you in fulfilling the key demands? Arguments, ठीक है? फैक्ट्स यस दे आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट क्योंकि उनका एक वैलिडेटिंग वैल्यू होता है. जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, जो भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, यू हैव टू, यू कैन से बैक इट अप विद सर्टेन फैक्ट्स. बट first focus, primary focus should be on arguments. Facts, the same kinds of facts that you are reading today, na, you will be encountering similar facts throughout the course of ancient India. So you will be getting to touch base with these facts again and again and again. So if you have a complete grasp over the arguments, you will be able to make do with these facts. ठीक है? तो focus on arguments rather than facts. ठीक है? Further, another key area of focus should be the core concepts, key insights, and critical notes that are present in your handouts. Because वहां पे
कुछ हिस्ट्री ऑप्शन से रिलेटेड स्पेसिफिक वोकैबुलरी यूज किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, एडवर्ड सईद्स थ्योरी ऑफ ओरिएंटलिज्म, और मे बी यान आस्कमैन्स आइडिया ऑफ कल्चरल मेमोरी एटसेट्रा. तो if you are able to get a hold of these things now, you will be able to utilize them well in your answer writing, and nobody else is teaching like this. Other people don't have access to this vocabulary, so do make use of this. Okay, so focus upon, additionally, focus upon key concepts, insights, and critical notes, highlighting the specific vocabulary that can be useful for आंसर राइटिंग. ठीक है, तो वंस यू हैव हाईलाइटेड ऑल दीज थिंग्स, उसके बाद क्या करना है? देन यू नीड टू सिट डाउन विद अ पीस ऑफ पेपर. तो मान लीजिए कल हमने टोटल, आई थिंक वी वेंट ओवर मटेरियल ऑफ रफली 10-12 पेजेस ना. तो you need to be able to compress all of that within one page. But do you think that in one page you are going to get all the detail that is present in all those things? नहीं, on all those pages वो नहीं मिल पाएगा. तो आपको लिखना क्या चीज है यहाँ पर? आपको you need to take a look at the headings जो index है, right? इंडेक्स इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ की. तो आपके माइंड में एक माइंड मैप बनना चाहिए कि इसके इस टॉपिक में, इस थीम के अंदर, इस हेडिंग के अंदर ये मैंने पढ़ा था. एंड you simply need one or two phrases to unlock that memory so that you can recall the entire thing. ठीक है, तो next you need to make a, let us say, mind map or index or skeletal framework of the notes, of the handouts, class notes, etc., highlighting or emphasizing upon the aspects mentioned above. Those arguments, ठीक है, that vocabulary, these things should be present in your notes. And जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स में हेडिंग्स यूज करी हुई हैं, वो आपके शॉर्ट नोट्स में भी होनी चाहिए, सो दैट योर शॉर्ट नोट्स आर एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ योर हैंडआउट्स और क्लास नोट्स, ताकि उसमें वो सारी चीजें आपको मिल जाएं जो कि आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट होंगी. ठीक है, तो हाईलाइटिंग द की एस्पेक्ट्स मेंशन्ड अबव. ठीक है, तो ये काम करने के लिए अभी आज के स्टेज में यू मे टेक एज मच एज 1.5-2 hours. डोंट बी कंसर्न्ड अबाउट दिस. इसकी भी आपको प्रैक्टिस लगेगी. दिस टाइम इज गोइंग टू कम डाउन अल्टीमेटली. व्हाट शुड योर शॉर्ट नोट्स नॉट बी? क्या नहीं होने चाहिए? It should not be simple compressed précis or cataloging of facts, right? It should have a particular sense. There should be a logic behind making this. क्योंकि आपको अगर कंप्रेस करना है, वो तो कोई बंदर भी कर सकता है, राइट? वो काम आपको नहीं करना. वो तो आप चैट जीपीटी को भी दे दोगे तो वो 41 पेज के नोट को 5 पेजेस में करके दे देगा. यू मे ऑल्सो फील कि हाँ मेरा काम हो गया, आई डोंट नीड टू पुट इन दैट एडिशनल 1.5-2 hours. बट that is where you are going to lose out. क्यों? Because that is the additional amount of time you are focusing specifically on the subject. बाकी लोग जो नहीं कर रहे होंगे, they are going to lose out on that.
क्लियर है? तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक नोट्स, इस तरह के शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए, बट शॉर्ट नोट्स विच शुड बी यूजफुल फॉर यू इन द फ्यूचर। अल्टीमेटली आपके पास आप एक एक स्टेज पे ऐसा पहुंचोगे कि मान लीजिए कि एंशिएंट इंडिया के हमारे पास 500 पेजेस के नोट्स हो गए। डू यू थिंक इट इज रियलिस्टिकली पॉसिबल फॉर यू टू रिवाइज द एंटायर थिंग इन वन नाइट? वो नहीं हो पाएगा। सो यू नीड समथिंग मोर मैनेजेबल, 40-50 पेजेस मैक्स, इतना हो जाना चाहिए आपके पास। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन डूइंग दैट। दिस डज नॉट मीन दैट व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग दीज नोट्स you should not revise your class notes or not revise your handouts. उनको रिवाइज करते रहो so that they remain relatively fresh in your mind, ताकि आप उस स्टेज पे पहुंच सको that you don't actually need those bulky notes. These notes are going to be sufficient in unlocking those memories, उनको retrieve करके लाने में, in highlighting, in refreshing those key concepts, that vocabulary, those arguments, those debates, वो आपको यहाँ पे याद हो पाए। ठीक है? अच्छा, vocabulary में it is also going to include historiography also. ठीक है? Specific historiography as well as vocabulary that can be useful. Yes, Satabdi, there is a Telegram group for the students enrolled over here. So what you can do now, or if I am able to remember it by the end of the class, I'll ask the team at Level Up IS to invite you to join that also. ठीक है? समझ में आया है इतना? अच्छा। सेकेंडली, कल एक टास्क मिला था, राइट? आंसर राइटिंग का। Some of you have submitted answers, but the vast majority have not attempted it. वो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं उसके लिए, बट आई बिलीव दैट एक छोटा सा आइडिया अगर मैं दे दूं आपको आंसर राइटिंग के लिए, इसी तरह से व्हाट आर द की स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्वड इन आंसर राइटिंग, हाउ शुड यू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है? तो देखो, जब हम आंसर लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहला पोर्शन क्या होता है? इंट्रो। देन फॉलोइंग दैट, बॉडी, एंड फाइनल पोर्शन, द कंक्लूजन। So if you are executing the answer, this is going to be the direction in which your answer is going to flow. This is the execution flow. In this direction, right? However, when you are thinking about the answer, it can often be useful कि आप उसको reverse engineer करने की कोशिश करो। As soon as you see the question, पहला प्रोसेस क्या आपको अप्लाई करना चाहिए? ट्राइंग टू डिकोड द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड देन थिंक कि अगर ये डिमांड फुलफिल करनी है, व्हाट नोट विल माय फाइनल कंक्लूजन स्ट्राइक। ठीक है? तो जो कंसेप्शन फ्लो है, इट वुड बी लाइक दिस। समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईच ऑफ दीज थ्री पोर्शंस? इंट्रो क्या पर्पस सॉल्व करना चाहिए? व्हाट इज द फंक्शन दैट इट शुड परफॉर्म? इट शुड बी लाइक एन ओपनिंग थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है? So without revealing too much about what is going to happen next, it should create the foreground for the rest of the answer, and it serves as a statement of problem. So what is the problem that we are trying to resolve? So problem statement लिख रहा है ये। समझ में आया? Then conclusion का काम क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपने प्रॉब्लम स्टेट किया है, दिस शुड प्रोवाइड द सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन
or resolution should be provided by it. If the introduction is highlighting any contradiction, by the time you reach the conclusion, there should be a synthesis. Matlab, it is all about making this phenomenon make sense. Whatever the subject matter is, it should make sense now. So, this portion should act as a solution, a resolution और synthesis. ठीक है? तो ऐसे में बॉडी का क्या काम होगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए आपने क्या रास्ता लिया. एंड आंसर राइटिंग is primarily a function of argumentation. You have to make arguments on one side, substantiate it, you have to make counter arguments, and then based on the evaluation of these arguments and counter arguments, you need to provide the final verdict. तो आप एडवोकेट का काम भी यहाँ पे कर रहे हो, दलीलें भी दे रहे हो और जज का काम भी फाइनली कर रहे हो. ठीक है, तो बॉडी इज फॉर argumentation and counter argumentation. ठीक है. नाउ व्हाट वाज दैट क्वेश्चन जो कल दिया था मैंने? डज एनीबॉडी रिमेंबर? एक बार दिखा दो जरा. हाँ, critically evaluate non-Brahmanical religious literature for the reconstruction of India's ancient past. ठीक है, तो the first task that we should do जब हम आंसर को कंसीव कर रहे हैं, that is to identify the demand of the question. कंसेप्चुअल स्टेज पर है ये. ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट डिमांड क्या है? वी नीड टू इवैल्यूएट the non-Brahmanical religious sources from ancient India as a source of history. So that means we need to talk about their strengths and limitations. ठीक है, तो a good exercise that you can do at this stage is to translate the question in your own words so that जितनी भी demands है ना, that should be part of that phrase. तो क्या क्या यहाँ पे key demands हैं? Strengths and limitations. ये हाईलाइट करनी है हमको. तो वंस दिस इज क्लियर, यू मस्ट बी गेटिंग एन आइडिया कि आपके जो मेन बॉडी है इसमें ये दो कंपोनेंट्स, ये जो हेडिंग्स तो आनी ही आनी चाहिए. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड डिसाइड इज व्हाट इज द नोट ऑन विच यू आर गोइंग टू कंक्लूड द आंसर. क्या बोलना चाहिए? ये इतने अच्छे हैं कि दैट ब्राह्मणिकल सोर्सेज एंड अदर अवेलेबल सोर्सेज शुड बी डिस्कार्डेड कंप्लीटली, or based on the balance between strengths and weaknesses, strengths and limitations, it is wiser that all sources must be read critically and comparatively to create a composite picture of the past. क्या करना चाहिए यहाँ पर? composite picture बनाने के लिए all sources must be utilized. ठीक है, तो you have decided कि conclusion में आप बोलोगे that while the strengths are quite significant, so are the limitations. And historians का काम ये नहीं करना होना चाहिए that they privilege one source of knowledge over the other source of knowledge. Taking into account the strengths and limitations of all available sources, they must use them critically and comparatively, right? Juxtaposing them against one and other to create a more complete picture of the past. ठीक है, तो this is the note that you want to strike in the conclusion. You need to highlight the complementarity between various sources. ठीक है, ये आपने काम कर लिया है. तो यानी कि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आप कंक्लूड किस नोट पे करने वाले हो. नेक्स्ट
क्या करना चाहिए? यू शुड डिसाइड, यू शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ कि मैं अपनी बॉडी में पहले किसके बारे में बात करूंगा, बाद में किसके बारे में बात करूंगा। तो बताओ, इफ यू वांट टू कंक्लूड ऑन दिस नोट सेइंग कि भाई खूबियां तो हैं लेकिन खराबियां भी हैं, एंड देयरफॉर we cannot rely exclusively on non-Brahmanical sources. Brahmanical literature and other available sources also have to be consulted. So, logically, what should have come just before this? Should you have been emphasizing upon the strengths and superiority of non-Brahmanical sources, or should you be undermining non-Brahmanical sources? Undermining non-Brahmanical sources. तभी तो आप लॉजिकली यहां पे पहुंचोगे। तो नेक्स्ट थिंक अबाउट स्ट्रक्चरिंग द बॉडी। ठीक है, कि फर्स्ट you have to talk about the strengths, and second you need to highlight the limitations, so that you are in the subsequent portion, in the second portion of your body, trying to undermine the non-Brahmanical sources so that you can give a balanced conclusion. So this is directly tied into this. Then finally क्या करना चाहिए? एक ही पोर्शन बचा है, कौन सा? द इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन भी आप अलग अलग टाइप के लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ट्राई एंड डिफाइन कॉन्सेप्ट बेस्ड कि भाई नॉन ब्राह्मणिकल सोर्सेस क्या है। दिस रिफर्स टू द पाली एंड प्राकृत लिटरेचर associated with the Buddhist and Jain communities respectively. It emerged as a major literary genre following or during the Mauryan and post-Mauryan ages. इस तरह का एक ओपनिंग कर सकते हो डेफिनेशन बेस्ड। देन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कर सकते हो, दैट in contrast to Brahmanical literature, Buddhist and Jain literature often offers unique insights, right? तो इस तरह से ओपनिंग कर सकते हो, उसके कई सारे स्ट्रेंथ्स हैं। हिस्टोरियोग्राफिकल ओपनिंग कर सकते हो, दैट ओरिएंटलिस्ट emphasis on Brahmanical literature resulted in a distorted picture of the past. Later, Marxist scholars shifted their attention towards non-Brahmanical sources for their many strengths, for their many advantages. ठीक है, इस तरह से ओपनिंग कर सकते हो। तो इसके अलावा भी देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ओपनिंग्स, तो दैट इज एंटायरली अप टू यू। लेकिन व्हाट डू यू नीड टू इंश्योर? Two things. One, that the introduction is consistent with the central theme of the question, उसके beyond नहीं होना चाहिए। Secondly, that it should flow into the introduction organically. ये नहीं होना चाहिए that there is a sharp break between the introduction and the subsequent portion. ठीक है, तो thematic consistency along with natural flow. This is what you need to ensure. तो यहां पे बताओ, out of the three options that I told you, which one would be best suited for this particular answer? Definition based, context based या debate based? Debate based, क्योंकि यहाँ पे क्लियर हिस्टोरिकल डिबेट है, एंड यहाँ पे फिर आप अगर डिबेट की तरह इसको प्रेजेंट करते हो, यू विल बी एबल टू मार्शल हिस्टोरियोग्राफी, तो दैट कैन ऐड वैल्यू टू द क्वालिटी ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो डिबेट बेस्ड ओपनिंग। तो अभी बताओ, am I talking anything rocket science? को समझ में आया है ना? So the thing is कि we don't have awareness of this. That is simply it. It is a process which we need to train ourselves in, which we need to perfect over time. और धीरे धीरे हो जाएगा। Yes, you are going to make mistakes. Yes, it is going to be a testing and trying process.
But once you have done this kind of work 150, 200 times, it is going to become yours. Maybe you are able to improve upon it. आप मेरे से बेहतर आंसर्स मौके पे, जैसे ही एक्सटेम्पोर बोलना होता है ना, मौके पे ही आप बना सकते हो, बट इसका प्रैक्टिस लगेगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग राइट फ्रॉम डे वन कि भाई लिखना शुरू करो। इट इज गोइंग टू टेक मोर टाइम एट दिस स्टेज, क्योंकि आपको अभी पेन पेपर पे ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, बट बाय द एंड आप 200 आंसर लिख के तो देखो, यू विल बी एबल टू डू दिस प्रोसेस मेंटली, एंड ऑब्वियसली एट द एंड आपको यूपीएससी मार्क्स किस बेसिस पे देगा? Only on the basis of the quality of your answers, your ability to fulfill the demand of the questions and complete the question paper on time. आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो उस बेसिस पर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो मैंने थ्योरी बता दिया है। कुछ चीजों कुछ क्वेश्चंस में हम प्रैक्टिस में भी करके देखेंगे इसको। ठीक है, व्हाट आर द हिस्टोरियोग्राफिक ट्रेडिशन? आई डोंट अंडरस्टैंड। या अमित, आई नो सम पीपल सबमिटेड लेट, लेकिन यार वो रात में 1-1 2-2 बजे आ रहे थे मैसेज, तो आई हैड गॉन टू स्लीप बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई विल हैव अ लुक एट देम। हर्षिता ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशंस लाइक बार्डिक ट्रेडिशन या पुरानिक ट्रेडिशन? तो देखो, हिस्ट्री एज वी वर एम्फसाइजिंग यस्टरडे, ऐसा नहीं है दैट इट इज हिस्ट्री ओनली इफ इट इज प्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। तो रिटन क्रोनोलॉजिकल एकदम परफेक्ट ऑथरशिप, वो उसमें कोई सस्पेशन नहीं होना चाहिए, राइट? क्रिटिकल लेंस के थ्रू लिखा होना चाहिए। केवल इस तरह से जो हिस्टोरिकल कंटेंट को स्टोर करते हैं वही हिस्ट्री नहीं है, राइट? देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ हिस्ट्री। वन इंपॉर्टेंट फॉर्म आर बार्डिक नैरेटिव्स। अब ये बार्ड क्या होता है? कौन होता है बार्ड? फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश लिटरेचर में हु इज फेमसली नोन सिंपली एज द बार्ड? प्रोबेबली इंग्लिश लिटरेचर का सबसे फेमस एक्सपोनेंट, आज तक दुनिया उसका नाम जानती है। अरे शेकी, राइट? शेक्सपियर, राइट? तो बार्ड इज अ पोएट। नाउ आजकल तो पोएट्स, हाउ डू दे अर्न मनी? खुद को पब्लिश करते हैं, राइट? मे बी गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलते हैं इन लोगों को, मे बी क्राउड सोर्सिंग के थ्रू, राइट? मे बी सम कंपनी इज पेट्रनाइजिंग देम कुछ वर्क करने के लिए। बैक देन ड्यूरिंग द एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड, क्या सिविल सोसाइटी से क्राउड फंडिंग पॉसिबल रहा होगा? नहीं रहा होगा। तो मोस्ट ऑफ देयर पोएटिक कॉम्पोजिशंस किसके लिए बनाए जाते थे? those people who had money or influence, primarily the crown, the kings। ठीक है, तो these were court poets, and if the king is paying them, तो किसके बारे में लिखेंगे? About the king। Are they going to curse and criticize the king, or are they going to praise the king? They are going to praise the king। so these court poets used to write eulogies, right, of the king। and क्या क्वालिटी होगा इसका? Are they going to be in verse form, or are they going to be in prose form? Prose form म्यूजिकल क्वालिटी होगा। ये किस लैंग्वेज में लिखे जाते होंगे? Do you think only the king would need to hear his own praise, or would it be intended for the common audience? It would be intended for the common audience। So these are poetic as well as पॉपुलर फॉर्म्स। ठीक है,
What kinds of episodes do you think these eulogies, these bardic narratives would try to cover? The king's victories, his valor, his generosity, all the good things about the king, his kindness, his determination to serve his people, his perseverance, his strength of character, right? These are the things. And how were these transmitted amongst the common people? Do you think India possessed a large literacy base back then? No, the majority of the population was illiterate. तो पढ़ना लिखना आता नहीं था. So how to take this message that the king is great, that he deserves your love, he deserves your obedience? You should never think of acting against the king. What will be the vehicle through which this message is conveyed? Through written word or through spoken word? Through spoken word, songs, poems, veer gathas of the king. ठीक है? तो स्पोकन वर्ड. कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? फॉर एग्जाम्पल पृथ्वीराज चौहान द थर्ड का जो बार्डिक नैरेटिव है चंद्र बरदाई ने बोला, राइट? पृथ्वीराज रासो. अभी जो पृथ्वीराज रासो है, composed by Chandra Bardai, do you think it survived exactly in its original form or through generations as it moved among the common people? वो यहाँ पे अपने भी कुछ कुछ songs, कुछ कुछ poems, कुछ कुछ verses add कर देंगे. They are going to do that as well. So, and this is a trait that is shared by most bardic narratives. So not only is it a popular medium, but the masses are actively involved in shaping it. So it is also a subaltern medium of preservation of history. What are the strengths of these kinds of works, या फिर this kind of medium? Why are they considered useful? क्योंकि इसमें पॉपुलर कंटेंट प्रेजेंट है. इट also reflects more closely what people considered important, the relationship between the common people and the state. It also is going to give you ideas about the value system that used to prevail in that period. क्योंकि masses में क्या चीजों को value किया जा रहा है, what was liked, what was disliked, that is going to be reflected over here ना. It is also going to give you a good idea about the lived experience of the people rather than any theorization of life during that period. So, because it is a popular and subaltern medium, strengths क्या हो सकते हैं इसके? That it highlights the lived experience of the people, that while the central theme is the achievements of the ruler, it also highlights the actual relationship and the feeling that the people had towards the rulers. Okay? So, relationship between the masses and the state. It can give you insights into their value system, daily life, and impact of major
political developments on commoners. लिव्ड एक्सपीरियंस दिखाता है, लाइफ नॉट एज इट ऑट टू बी, जो कि नॉर्मेटिव टेक्स्ट एम्फसाइज करते हैं, बट एक्चुअली एज इट वाज. ठीक है. एट द सेम टाइम इट सफर्स फ्रॉम सम सिवियर लिमिटेशंस. तो बताओ, what are the limitations that it suffers from? Colonial scholars, for example, would they consider it to be proper history? Why? It was not present in written form. Authorship suspect है, उसके ऑथर के मोटिवेशंस क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली कौन कौन ऑथर है, किसने किसने कंट्रीब्यूट किया है. इफ दिस इटसेल्फ इज नॉट क्लियर, हाउ कैन ऑथरशिप बी सिक्योर? ठीक है. तो ओरल मीडियम है, वीक ऑथरशिप है. फर्दर, who used to make the original compositions? Court poets paid for by the rulers who used to occupy the central space in these works. So batao, are they going to be written objectively or will there be exaggerations? Exaggerations. So achievements are going to be exaggerated. Faults, weaknesses, they are going to be, you can say, hidden or obscured. Okay? So it is not objective. There is a strong royal bias or patronage bias associated with them. Then और क्या weakness? Is there any certainty that all the events that this work talks about, did they actually take place? Historicity इसका completely clear है? नहीं है. It is suspect. Further, because it is written in poetic form, because it is conceived in poetic form, तो critical हो सकता है ये वर्क? नहीं हो सकता है. एंड क्योंकि यूलोजिस्टिक है तो क्रिटिकल क्वालिटी इस वर्क का और डिमिनिश हो जाता है. ठीक है. तो poetic form weakens its critical credentials. तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं. नाउ ये जो कोर्ट पोएट्स होते थे, दे हैड मेड पोएट्री और सिंगिंग फॉर द किंग अ फैमिली प्रोफेशन. तो ये एक जनरेशनल एक्सरसाइज था. एंड these families or these clans had organized themselves into professional groups जो कि काम ही यही कर रहे थे. थ्रू आउट द एजेस ये जो कोर्ट पोएट्स जो इस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे हैव बीन नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज पौराणिकाज, जो पुराण की कहानियां रिसाइट करते हैं. लेकिन पुराण में क्या है, और वंशानुचरित वाला कंपोनेंट भी है, तो दे आर एक्चुअली सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द किंग. कथाकार्स, कथाकार्स मतलब कहानी सुनाने वाला, राइट. सूत, लिटिल मीनिंग क्या है सूत का? The charioteer, the person who drives the chariot. For example, in the Mahabharat war, who acted as Arjun's charioteer? Shri Krishna. So he was acting as the सूत. And पूरे समय क्या सुनाते रहे अर्जुन को? कहानी सुनाते रहे, गीता का ज्ञान देते रहे, right? So from there, सूत has also become associated with a storyteller. मागध,
This is also a name for a storyteller. Heart. अच्छा, ये जो terms हैं, you are going to find references to these terms in ancient India. Medieval India में नए नाम आ जाते हैं. Bhat and Charan. These were the storytellers, court poets, bards employed by medieval Indian rulers. ठीक है? समझ आया है? या ग्रेट. तो समझा तो दिया. अब आपने अपना काम बढ़वा लिया. राइट? टेक डाउन अ क्वेश्चन. Assess the significance of bardic narratives as a source of Indian history. 10 marks. हो जाएगा? ठीक. Maybe you may have some difficulty with historiography और maybe with facts, लेकिन arguments आपके पास सारे हैं, तो you know कि क्या headings होंगी, क्या सब headings होने वाली हैं यहाँ पर. All you need to do is to fill in the blanks now. उतना आपको करना पड़ेगा. Historiography का भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है. तो which kind of scholars are going to dismiss this as a work of history? Colonial scholars. और कौन बोलेगा कि नहीं, these things should be taken into account? Yeah, subaltern scholars, revisionist scholars जो हैं, they are going to take these things into account. In fact, this is a major area of study in most universities today. Bardic narratives को पढ़ना, ठीक है? Now, religious literature we had covered. Now we come to some secular literature. Among secular literature, we find number of texts such as the Ashtadhyayi of Panini. What was it? The earliest work on grammar in any Indian language. कौन सी लैंग्वेज का ग्रामर है इसमें? संस्कृत का. What is the period that this work is believed to belong to? Yeah, 5th century BC. तो either contemporary to Buddha or shortly after Buddha. तो second urbanization का product था ये. Then we also have works such as the Arthashastra of Kautilya. What is it? Yeah, it is a work on statecraft. ठीक है? It is a significant text on polity. Its time period, however, is not very clear. Right? तो जो work है, it is believed that it was created and expanded over a long period of time. Multiple scholars might have contributed to it. And किसको authorship इसका credit दिया जाता है? Somebody known as Kautilya. However, who is Kautilya? That is a big question mark. So there is one school of thought जो बोलता है Kautilya कौन है? None other than Chanakya or Vishnugupta, the guru as well as prime minister of Chandragupta Maurya, the founder of the Mauryan Empire. And according to this school of thought, अर्थशास्त्र में जो पॉलिटिकल रियलिटी रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कौन से पीरियड का है? मौर्यन एज का, स्पेसिफिकली चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड का. हाउएवर, देयर इज अनदर स्कूल ये बोलता है that Kautilya was not the name of the scholar, rather it was simply the title of the scholar. For example, जैसे हम जो विद्वान लोग होते हैं उनको पंडित नहीं बोल देते हैं, तो पंडित सच एंड सच, तो इस तरह का ये टाइटल रहा होगा. This title may have been held by a succession of scholars throughout ancient India, and all of them may have contributed to creating or contributing to some portion of the Arthashastra. So in this way, it is believed that the earliest portions of the Arthashastra belong to the pre-Mauryan period, Mahajanpat period. The latest sections
may belong to as late as the Gupta period also, right? Post-Mauryan Gupta period tak. But the bulk of the work, it is believed it belongs to the Mauryan age. Okay? So its time period is not very clear. Its earlier portions correspond to the pre-Mauryan age and its later parts correspond to the post-Mauryan period. But on the basis of similarity in the terminologies used in the Ashokan inscriptions and the Arthashastra, we can conclude that most of its parts correspond to the Mauryan age. And although neither any Mauryan king or their capital Patliputra has been mentioned in this text, the Arthashastra is an encyclopedia for the study of the Mauryan age. क्यों? ये किस तरह का टेक्स्ट है? Why has no king been mentioned? It is a normative text. It is an instructive text. It is written as an instruction manual for an ambitious ruler who wants to become a universal conqueror. ठीक है, तो जो रूलर है, ambitious ruler, उसको एक नाम से बुलाया गया है. He is called the would be conqueror, विजिगिशु. ठीक है, तो विजिगिशु के लिए ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है. The Vijigishu is positioned as the ruler, ambitious ruler, capable ruler of a mid-sized, mid-power kingdom. ठीक है, he is surrounded by both large as well as strong neighbors, and it is his desire to expand his power, project his power across the land to become a Chakravartin Raja. तो इस पर्सपेक्टिव से लिखा गया है. दैट इज वाई नो किंग इज मेंशन्ड, नो कैपिटल इज मेंशन्ड. थ्योरेटिकल वर्क है ये, right? It is not an account of things as they were happening. It is an account of things as they should be. Here, Kautilya was giving his advice to the king. You should do this, you should not do this. Okay? So that is why no ruler has been mentioned. Yet, we are clearly able to locate the Arthashastra to which period? To the Mauryan age. Why? Because many of the words that he uses to denote the various officials, the nomenclature he uses, the kind of vocabulary he uses, we find the same kind of words in the Ashokan edicts also. Neither before nor after have the same set of words been used to denote these kinds of officers. ठीक है, तो दोनों को correlate कर लिया है हमने. The Arthashastra is an encyclopedia for the study of the Mauryan age, and although the information given by this text should be corroborated by other sources as well. Okay? Then, apart from this, we also have a number of other secular texts, such as the Mahabhashya of Patanjali. So, what is the Mahabhashya of Patanjali? It is also a work on grammar, written during which period? Shunga period, post-Mauryan age ka. By whom? By a grammarian and yoga practitioner, Patanjali, right? At the court of possibly Pushyamitra Sunga. And was he creating a new grammar of Sanskrit, or was he commenting on an existing very famous work on grammar? Commenting. तो सबसे पहला वर्क कौन था? अष्टाध्यायी. तो it was a commentary on the अष्टाध्यायी of Panini. ठीक है. Then we have the Mudra Rakshas of विशाखा दत्त. ये किस पीरियड का है? गुप्ता पीरियड का. चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य का कंटेम्पररी था विशाखा दत्त. इनफैक्ट he was the primary court chronicler, dramatist and court poet during the period of Chandragupta II Vikramaditya. And Mudra Rakshas में he talks about the victory of Chandragupta, but not Chandragupta of the Gupta dynasty. Chandragupta मौर्य का. तो यहाँ पे किसके बारे में बात करी जाएगी? धननंदा, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य. एंड यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? चाणक्य नीति, साम दाम दंड भेद एटसेट्रा, रिटन ऑलमोस्ट 700-800 years आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है. एंड देन वी हैव द नीतिसार ऑफ कामंडका. नीतिसार ऑफ कामंडका, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ वर्क इज दैट? It is also a work on statecraft. ठीक है. तो like the Arthashastra of Kautilya, it is also a work on statecraft. Like the Arthashastra of Kautilya, it is also a normative or instructive work. It prescribes some things, it prohibits something else. तो बताओ, ये theoretical work है या फिर lived experience को reflect कर रहा है?
थ्योरेटिकल वर्क है, ठीक है। From the Mahabhashya of Patanjali, we get information about the post-Mauryan age. Likewise, Vishakhadat gives information about the rise of Chandragupta Maurya to power. The Nitisar focuses on political ideas during the Gupta age. Okay? But any of these words, are they going to deal with only the subject that they are interested in, or will they also make references to other dimensions of life? Other dimensions, for example, if Nitisar is giving advice on politics, can there be any politics without society? No. Can there be any politics without geography, without economy? हो सकता है? नहीं हो सकता है. महाभाष्य ऑफ पतंजलि ग्रामर के रूल्स तो सेट कर रहा है, बट उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी तो करना पड़ेगा ना. ही विल हैव टू गिव एग्जांपल्स ऑन हाउ टू करेक्टली यूज एंड नॉट यूज दीज ग्रामेटिकल टूल्स. व्हाट इज ही गोइंग टू टॉक अबाउट? Is he going to talk about some alien world? No, he is going to talk about what he sees around him, the kinds of activities that people were involved in. So we need to glean information from all these sources. Clear hai? समझ में आया? Then we also have access to Tamil texts. Earliest Tamil texts known as Sangam literature. Which period is known as the Sangam age of the Deep South? Earlier, it was believed that it stretched from the 1st century BC to roughly the 3rd century AD. However, recent historiography has suggested that it stretched much farther back. तो एक intermediate date suggest करी गई है, the 3rd century BC the Sangam age begins, and then एक और radical date suggest करी गई है that South India में urbanization it happens roughly at the same time that urbanization is happening for the second time in North India. So when does second urbanization begin in North India? 6th century BC. So there is a third date that has been suggested. The Sangam age actually began back in the 6th century BC as well itself. And there have been quite strong archaeological discoveries to suggest this as well. Now, while Sangam age refers to this period, maybe from 6th century to 6th century BC to 3rd century CE. So almost 900 years ka period hai, right? However, when does Sangam literature belong to? To the same time period or to a later period? To a later period. The bulk of the Sangam texts are believed to have been composed and compiled between the 5th to 7th century CE. Pandyan rulers of Madurai के अंदर, ठीक है. However, what is the theme? Life of that 5th to 7th century CE or life during the previous age? Life during the previous age. So they were writing in the 5th to 7th century, but they were writing about 6th century BC to 3rd century CE. ठीक है? समझ में आया इतना? Sangam literature is an important source material. Sangam literature may be divided into two types. All these things now we will be reading in much greater detail जब हम subsequent portion पे पहुंचेंगे. तो यहाँ पे you can consider this to be simply a primer. You get an idea of all this. कौन-कौन से genres? Akam and Puram genre. Akam, it refers to literature dealing with the inner field, deals with personal or human aspects like love in an abstract or metaphorical manner. तो लव बेस्ड थीम है, लॉन्गिंग, सेपरेशन, पैशन, ये वाली थीम्स यहाँ पे डिस्कस करी गई है. तो some scholars also consider it to be the feminine aspect of Sangam literature. तो masculine aspect कौन सा होगा? दूसरा वाला. Puram literature, the outer field, deals with all other aspects of human experience such as valor, ethics, benevolence and social life. तो इसका एक मेजर थीम है वॉर. तो लव एंड वॉर, फीमेल एंड मेल एनर्जी. A.K. Ramanujan describes the Puram poetry as a kind of public poetry, जो कि आप पब्लिक में सुना होगा. एंड ये वाला अकम पोएट्री ये गर्लफ्रेंड को सुनाने के लिए होता है, ठीक है. तो अकम एंड पुरम पोएट्री. देन some important Sangam works.
the Pathine Male Kanakku, that is the 18 major anthologies. Anthologies are collections of poetic works which can be divided into two portions, Ettu Togai and Pattu Pattu, yeah, Padit Pattu. Okay? 8 anthologies and 10 idols, as well as some portions of Tolkappiyam. तो अर्लीस्ट संस्कृत ग्रामर इन इंडिया कौन सा था? अष्टाध्यायी. अर्लीस्ट तमिलियन ग्रामर, the Tolkappiyam, written by Tolkappiyar, ठीक है, into the Sangam literature. Then जैसे पथिने मेल कनक्कू है, वैसे ही एक पथिने किल कनक्कू. Pathine Male Kanakku refers to the 18 major anthologies. Pathine Kil Kanakku is the 18 minor or lesser anthologies. It is a collection of 18 poetic works created during the post-Sangam period, 100 to 500 CE. Then another major work, Thiruvalluvar's Thirukkural. It is also known as the Tamil Veda. What is the important theme over here? It is philosophy, ethics, morality, questions of what is right, what is wrong, right? So these kinds of things. And then two famous epics, the Silapatikram and the Manimekalai. So they also give a good insight into life as it may have been during this period. What people cared about, how was society organized, how was the economy differentiated, how did the rich live, how did the poor live, what kinds of economic activities they were involved in, what were the emotions that drove the Tamil mind during this period. So these kinds of things are covered in these epics. They were also composed during the 5th, 6th century. Then after Sangam literature, एक दूसरा genre of Tamil literature emerge होता है. This is known as Tamil Bhakti poetry. 6th to 9th century onwards. ठीक है? Under whom? Which ruler who was ruling Tamil Nadu during this period? The Pallavas. ठीक है? तो Pallavas and Chalukyas, these were the two dominant powers in the southern peninsula, and deep south में Pallavas का dominance था. ठीक है? Early medieval period Tamil literature includes intense devotional poetry of the Bhakti saints. Tamil poetry में, Tamil Bhakti में there were two major components. एक Shaivite cult था, दूसरा Vaishnavite cult था. Shaivites were known as Nayanars, Vaishnavites, Alvars. And how did they profess their faith? How did they try to spread their message? Through poems, through songs. ठीक है? तो a major enterprise of Tamil Bhakti saints was to compose these songs in the popular medium, in the local language, so that people में ये songs broadcast किए जा सके. ठीक है? Then Telugu and Kannada literature also started becoming available from the early medieval period onwards. Clear है? तो ये है एक छोटा सा catalog, an overview of evolution of literary texts in the deep south. And then we have the accounts left behind by foreign travelers. Foreign accounts work as a supplement to indigenous accounts. We can underline two extremely important positive features of these accounts. First, क्या है? They give us information about some areas, regions or dimensions of Indian past which may be obscured from indigenous literature. Either because उस जमाने में यहाँ पे writing नहीं था, या फिर the Indian intellectuals did not consider these dimensions to be important, right? Or many other things maybe. So they give us information about some regions or dimensions about which indigenous literature remains silent. And secondly, most of the foreign accounts are supposedly free from the ideological prejudices which we find in the indigenous literature. ठीक है? तो
With regards to indigenous literature, you remember Foucault's concept of power knowledge. Is that going to be as dominant in foreign literature? No, because the foreign observer is not going to be an interested party. He's a non-interested party. तो उसका perspective कैसा होगा? As an indigenous intellectual who is trying to justify or criticize some things, or simply as a curator in a museum who wants to catalog, तो curatorial attitude होगा, तो he is going to be relatively more, you can say, objective in nature, उतना bias नहीं होगा. ठीक है? These are the two important positives. However, they have some limitations as well. ठीक है? एंड यहां पर एक की कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म. ठीक है? Sayyid was an Egyptian scholar with British heritage also, quite prominent, and he has put forward the idea of Orientalism. That focuses on how previous generations of Westerners, जो एज ऑफ एंटिक्विटी से हैं, क्लासिकल एज से, ग्रीक एंड रोमन पीरियड से, when they came in touch with the East, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे इंडिया हो, चाहे फार ईस्ट हो, चाइना हो, कोरिया हो, जापान हो, तो हाउ डिड दे लुक एट द ईस्ट, हाउ डिड दे लुक एट द ओरिएंट, उसके बारे में इसने अपना व्यू दिया है. ही postulates that outsiders often interpret foreign societies through their own conceptual framework. ठीक है? तो they have their own understanding of how the society is organized, of economic relations, how they function, what is the political dynamic, how it should work, what is the balance between duties and obligations, etc. उनके पास अपना खुद का एक अवेयरनेस है ना, वो यही अवेयरनेस लेके आते हैं and they apply it onto Eastern societies. Is this going to help them in making an accurate picture of the East या फिर distorted picture? Distorted picture बन जाएगा इसका. For example, Megasthenes understood the caste as rigid occupational classes. अब ancient Greece में तो class system था, caste system नहीं था, तो इसको क्या लगा, ये जो यहाँ पे castes हैं, they are actually rigid occupational classes, and he is going to assign the same kinds of attributes जो कि caste में exist होता है to the class system in India. First of all, he divided the Indian society into 7 different classes, right? फिलोसफर्स भी हैं उसमें, हर्ड्समैन भी हैं, फार्मर्स भी हैं, सोल्जर्स भी हैं, काउंसलर्स भी हैं, एटसेट्रा, ऑफिशियल्स भी हैं, these kinds of things. Then he said that they are rigid, यानी कि यहाँ पर there is no possibility of class mobility. If you are born as a philosopher, you in a philosopher's family, you are also going to remain a philosopher. क्या ऐसा कहीं पे होता है? नहीं होता है. तो knowingly और unknowingly वो इंडियंस को कैसा पोर्ट्रे कर रहा है? डज द इंडियन सोसाइटी वर्क रैशनली और इरैशनली? इरैशनली काम करता है, कोई सेंस नहीं है. ठीक है? फर्दर, चाइनीज पिलग्रिम्स व्यूड इंडिया प्राइमरली थ्रू बुद्धिस्ट कंसर्न्स. तो हाउ इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म? how is Indian Buddhism different from Buddhism in China? How do Buddhist monasteries function here? How do they receive patronage? What kinds of activities they are involved in? This is the sum total of the Chinese interest in India. But was India only about Buddhism? India was about much more, right? They are going to create a fragmented picture of India. Okay? And some Islamic writers also exoticized Indian customs. For example, Al-Biruni, he wrote extensively about India, Indian society, the habits of Indians, etc., these kinds of things. But a major focus of his was to highlight the differences between the customs, practices, habits in India as opposed to the other parts of the world. For example, India में क्या बोलेगा, क्या highlight करेगा specifically? That there is a particular group of Indians who take great pride in growing out their nails. तो उनके 2-3 फुट के नाखून हो जाते हैं. And why is this a matter of pride for them? Because this indicates that they are so wealthy, that they are so comfortable that they don't have to lift their hand to do any work. ठीक है? Exotic image नहीं बना,
क्या यार ये क्या अजूबा है, केवल इंडिया में ही हो सकता है ऐसा, कितना बेशुमार वेल्थ रहा होगा। बट एट द सेम टाइम आर दे नॉट ट्राइंग टू इन्फेंटलाइज इंडिया, नॉट ट्राइंग टू पोर्ट्रे इंडिया एज इंफीरियर? ये भी हो रहा है साथ में, ठीक है। तो ये जो थ्योरी ऑफ ओरिएंटलिज्म है, ये ऐसा बोलता है बिकॉज these people, these foreign travelers apply their own cultural lens, their own understanding of polity, their own understanding of human systems onto foreign societies in a relatively short period of time. They end up creating what kind of an image of the Orient? An image which is irrational, inferior and exotic. समझ में आया है? So this is a major shortcoming of theirs. We can underline some distortion in facts and figures in foreign accounts because foreign travelers were alien to the Indian situation. They did not have the proper knowledge about India. For example, Megasthenes divided Indian society into 7 castes, saying that slavery did not exist in India at all. But Arthashastra, does it talk about slavery or not? Openly talks about it. Here also, for the sake of convenience, we can divide foreign accounts into different segments such as Greek, Roman, Chinese accounts and accounts of Arab travelers. So, brief look at each of these also. Greek and Roman accounts are important source materials for the study of ancient India. Who was the first Greek scholar to write about India? Write about India. Herodotus, the father of history, right? In his Historia, he mentions India. Did he even travel to India? Or was he basing his writings on hearsay, whatever he had heard about India? Hearsay account दिया था इसने. But आई विटनेस अकाउंट पहली बार कौन देता है? अलेक्जेंडर के साथ जो स्कॉलर्स आए थे, पीपल सच एज Aristobulus, Curtis, Anacicrates, Nearchus, etc. They left the earliest eyewitness accounts of the Northwest. Most prominent Greek work on India, सबको किसका नाम पता है? इंडिका. किसने लिखा? Megasthenes ने. Was he a contemporary of Alexander or did he come after Alexander? After Alexander. So Alexander had conquered parts of the northwestern portion of the subcontinent, and after the death of Alexander his empire splintered. तो ये जो ईस्टर्न पोर्शन था, यहाँ पर एक नया एम्पायर इमर्ज होता है नोन एज द सेल्यूसिड एम्पायर, सेल्यूसिड डायनेस्टी. द फर्स्ट रूलर वाज सेल्यूकस निकेटर, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जनरल्स ऑफ अलेक्जेंडर. उसने यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया था. नाउ ही एंड चंद्रगुप्त मौर्य वर नेबर्स. तो कैसे रिलेशंस होंगे? या तो लड़ाई होगी या दुश्मनी होगी, न्यूट्रल तो नहीं हो सकते हैं. तो पहले लड़ाई हुई, फिर उसके बाद दोस्ती हो गई, ठीक है. एंड एज पार्ट ऑफ देयर फ्रेंडशिप दे एक्सचेंज्ड एम्बेसीज. Megasthenes was the official Bactrian या Seleucid emperor, sorry, ambassador at पाटलिपुत्र in चंद्रगुप्त मौर्य's court, ठीक है. तो उसने एक आई विटनेस अकाउंट दिया है. Apart from this, before the excavation of Harappan cities, clear-cut dates in Indian history were supposed to start from 326 BC. Why 326 BC? रेडियो कार्बन डेटिंग नहीं था, तो स्पेसिफिक डेट 326 BC से ही क्यों शुरू होते हैं? Because this was the year in which Alexander's invasion began. Problem with the Indian time keeping system, Indian calendars was कि एक कोई systematized calendar नहीं यूज होता था. During different periods and different regions, different calendars were being used. Further, chronological referencing was often done in terms of the reign year, the regnal year of the ruler. For example, if you look at the Ashokan edicts also ना, तो वहां पे mention होगा that in the 8th year of his reign he did this, in the 10th year of his reign he did this. तो specific dates are not going to be mentioned कि calendar के हिसाब से कौन सा साल चल रहा है, that is not going to be mentioned. Therefore, accurately placing these developments in a rational framework, that was proving to be a little bit difficult. However,
Alexander, we knew he invaded India between 326 to 324 BC. So beginning of his invasion is 326. So that acts as a very important reference points for dating subsequent events in Indian history. In relation to that, everything starts falling into place. Okay? When William Jones identified the name Indica's Sandrocotus with Chandragupta Maurya, the dates in Indian history became clear. तो इंडिका में सैंड्रोकॉटस के बारे में मेंशन किया है. It was none other than Chandragupta Maurya. The indigo of Megasthenes is a significant source material for the study of the Mauryan period, but his account is not available today. Okay? That book has been lost to time. What survives is excerpts. तो उस बुक को रेफरेंस मटेरियल यूज करते हुए other Greek scholars have written about India and written about the Mauryan Empire of that period. This is what survives. Whatever information we get from the Indica, we receive through references given by classical authors of subsequent periods such as Plutarch, Strabo, Pliny, Diodorus, etc. Okay? Then further there are texts such as the Periplus of the Erythraean Sea by an anonymous author, right? This is the name of the book, Periplus. It was found at a location on the banks of the Erythraean Sea. This was the Greek name for the Red Sea. And Red Sea का significance क्या था? It was an important trade route connecting India to Rome. तो ये रोमन पीरियड का वर्क है. The name of the author we don't know about, but what is the main subject of focus over here, subject of interest over here? Trade in the Indian Ocean region. So it gives extensive details about ports, shipbuilding, the volume of trade, the types of commodities that were being traded, the amount of money that was flowing into India, the trade route connecting the Indian ports into hinterland, into inland Indian cities. So these are the kinds of things that it talks about quite extensively. Okay? So quite useful these foreign accounts are in this sense. Then Chinese accounts, the accounts of Fahian and Yuansang, are an important source material for the study of the Gupta age and the period of Harsha respectively. Fahian Chandragupta II के period में आया था and Yuansang Harsha के period में. Yijin, a 7th century Chinese traveler, lived at Nalanda monastery for 10 years. So he has also given an exhaustive account of Nalanda. However, problem क्या है यहाँ पर? They viewed India exclusively through the lens of Buddhism. Okay, so that is one problem with this account. Arabian accounts, among the Arabian accounts, the accounts of Suleiman, Al-Masudi, Ibn Khudrab, etc. are significant. ये कब इमर्ज होने शुरू होते हैं? After the Arab conquest of Sindh. Arab conquest of Sindh, early 8th century. So from that period onwards, these accounts begin emerging. Suleiman talks about the Pala and Pratihara rulers in the 9th century CE. Likewise, Al-Masudi came to India in the 10th century AD and mentions Rashtrakuta kings whom he calls Vallabh Raj. Okay? So this is a simple catalogue of foreign accounts. Now, let's see. Right. Now, literary sources. This one we have covered. ये हो गया. This one. How did Itihas Puran tradition begin? ये हो गया. Have we talked about Kalhan? Yes. Now, foreign travelers. Look at these questions. In what ways are the accounts of Greco-Romans and the Chinese helpful in reconstructing the social history of India? How far was their information corroborated by other contemporary sources? Will you be able to write an answer? Keep in mind 60 markers अब आते नहीं हैं, maximum 20 marker आएगा, 4 pages में लिखना होगा. Will you be able to do this?
अच्छा. Second, while using the accounts of foreign writers, historians must distinguish between statements based on hearsay and those grounded in perceptive observations. Elaborate with examples. क्वेश्चन का डिमांड समझ में आया है कि फॉरेन स्कॉलर्स को पढ़ते समय एक इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखना चाहिए. We need to ensure that whatever we are taking away from it is not based on hearsay, rather eyewitness testimony होना चाहिए. We need to distinguish between the two. और वो कैसे करना है, तो ये कर पाओगे अभी? कैसे करोगे? अभी तक बताया नहीं है, राइट? तो दिस इज अ ब्लाइंड स्पॉट फॉर यू. थर्ड, foreign accounts as a source of ancient Indian history may have some advantages but also a few shortcomings. Citing appropriate examples, examine this statement. बताओ, हो पाएगा? Strengths and limitations. अच्छा. And finally, assess the importance of Chinese and Arab travelers in the reconstruction of the history of India. GS में क्वेश्चन आया था. Will you be able to address this? तो यहाँ पे let us take one question as the standard, ये वाला, and try to address all these things. So foreign accounts as a source of ancient Indian history may have some advantages but also a few shortcomings. Citing appropriate examples, examine this statement. So what is the demand of this question? बताओ, what is the question expecting us to do? अरे, foreign sources may have some strengths and also some shortcomings. Using some appropriate examples, we need to elaborate upon this. ठीक है? तो highlight the strengths and weaknesses of foreigners accounts. तो बताओ, what should be the note on which you conclude the answer? क्या नोट स्ट्राइक करना चाहिए कंक्लूजन में? कि बहुत अच्छे होते हैं, एक्सक्लूसिवली दे शुड बी यूज, नो अदर सोर्सेस शुड बी कंसल्टेड, दे आर परफेक्टली ऑब्जेक्टिव, दे आर एक्सट्रीमली एक्यूरेट, हाईली डिटेल्ड, या फिर एक कॉशियस टोन आपको लेना पड़ेगा? यस, दे शुड बी यूज्ड बट carefully, critically and comparatively. ठीक है? So that is the note that you need to strike in the conclusion. Can be used but carefully, critically and comparatively. तो बताओ, in the penultimate portion, just before this, what should you have highlighted? The strengths of these accounts or their limitations? Limitations. And just after the intro, किसके बारे में बात करना चाहिए? You should try and highlight the strengths of these accounts, right? And ये तो हमने कर लिया है स्ट्रक्चरिंग, तो जो कंसेप्शन फ्लो वाला पार्ट था वो हमने क्लियर कर लिया है. नाउ एग्जीक्यूशन वाला पार्ट शुरू कैसे करें? यहाँ पे दो चीजें आपको इंश्योर करनी है. क्या क्या? That you remain thematically consistent with the central demands of the question, and second, your introduction should flow smoothly into the main body. तो मेन बॉडी में पहले पोर्शन में किसके बारे में बात करनी है? स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करनी है. तो ये आपको यहाँ पे हिंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? यस. तो बताओ, हाउ कैन यू स्टार्ट द आंसर?
बता देना, डेफिनेशन बेस्ड स्टार्टिंग कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड स्टार्टिंग कर सकते हो, हिस्टोरियोग्राफिकल स्टार्टिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हिस्टोरियोग्राफिकल स्टार्टिंग डज इट मेक मच सेंस? नहीं, क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी पता नहीं है, एंड अगर उसको यूटिलाइज भी करते हो, इज इट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू टू योर आंसर? नॉट मच वैल्यू विल बी एडेड। ठीक है, तो बताओ क्या करना चाहिए? कॉन्सेप्ट बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड स्टार्टिंग क्या लिखोगे? Foreign accounts are left behind by travelers who arrived in India on various businesses, चाहे as pilgrims, चाहे as traders, चाहे as ambassadors, diplomats, soldiers, ये लिखना do you think it makes sense? या फिर context based होना चाहिए? Context based, भाई India was the veritable center of the world ना, everybody wanted to come here, everybody wanted a piece of India, everybody wanted to deal with India, fabulous wealth, great culture, extreme diversity, exotic views, ये सब कहाँ पे मिलेगा? इसीलिए तो लोग थाईलैंड जाना चाहते हैं बार बार दौड़ करके, ब्राजील जाना चाहते हैं, राइट? गेट ऑल दीज थिंग्स ओवर देयर। तो उस जमाने में इंडिया ये था, ठीक है, and that is why so many foreign travelers came to India, and they have left behind rich accounts which act as valuable sources। ठीक है, तो ये probably it would make more sense। तो यहां पर you can write that India was the cynosure of all eyes, the very center of the world। ठीक है, attracted countless foreign traders, travelers, adventurers, fortune seekers, diplomats, and scholars, and these have left behind a rich account which is extremely valuable for the reconstruction of ancient Indian history। हो गया? All the important points have you touched upon that? ठीक है, अब अगला क्या करना है? Using appropriate examples, you need to highlight the strengths of these foreign accounts in reconstructing the past। तो बताओ, why are they important? कुछ ऐसे दौर, कुछ ऐसे रीजन्स जिसको इंडिजिनस लिटरेचर कवर नहीं करता है, या फिर कुछ ऐसे डायमेंशंस जो कि इंडियन इंटेलेक्चुअल्स के लिए मंडेन थे, रूटीन थे, फैक्ट ऑफ लाइफ थे, बट फॉरेन ऑब्जर्वर्स के लिए हो सकता है कि जो इंडियंस के लिए मंडेन हो वो उनके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो व्हाइल इंडियन स्कॉलर्स मे नॉट हैव एम्फसाइज्ड अपॉन दोस डायमेंशंस, वो यहाँ पे एम्फसाइज होंगे। तो फॉरेन सोर्सेस कैन प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन व्हाट? फिलिंग दी gaps left behind by indigenous literature। That is one thing। और बताओ, और क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है? Many of these foreign travelers came to India in their capacity as pilgrims or diplomats or soldiers, and thus they are able to offer what kind of an account of India's political, military, uh, religious, or educational geography? A theoretical understanding they would create, या फिर an eyewitness account they would leave behind? Eyewitness account they would leave behind. For example, Huan Sang would give an eyewitness account of Nalanda, the Ajanta caves, etc. ठीक है? तो आई विटनेस अकाउंट्स देंगे। Thirdly, in most cases, was it highly likely that these foreign travelers would be eulogizing Indian rulers or Indian society?
or was it more likely that they'd be interested in cataloging what was going on in India honestly and accurately? Honestly and accurately chronicle करने की कोशिश करेंगे, catalog करने की कोशिश करेंगे, meaning that they would be relatively freer of ideological bias or patronage bias or cultural bias, etc. ठीक है? तो relative objectivity, it also adds value to these things. Further, who were these people? They were foreign travelers in a distant land. उतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, तो is one area of focus not going to be to compare their homelands against India, highlight the similarities and differences, to highlight the tendrils of trade, culture, philosophy, systems that connect India to foreign societies and foreign peoples? Yes, so foreign contact, trade, relations, cultural exchange, कंपैरिजन जिस तरह का यहां मिलेगा वो नेटिव लिटरेचर में ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला है. ठीक है, और बताओ और कोई खूबी. हमने अभी क्या देखा था कि विद अलेक्जेंडर्स इन्वेजन इंडियन हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी में ज्यादा सर्टेनिटी आ गई कि नहीं आ गई. तो ऐसे ही the accounts of these foreign travelers can act as important reference points for major developments in Indian history. So further, if a Sanskrit scholar is writing a treatise on philosophy, is he going to spend a lot of time and attention on, let us say, languages and how they evolved, regionalization of languages, various dialects, etc.? ये सब उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा? नहीं होगा. इनफैक्ट इफ there is no English work specifically dealing with the field of linguistics, तो वहां पर इस तरह का फोकस नहीं होने वाला है. एंड even if there is a work which deals with grammar, it will be related to that particular language only. For example, तोलकप्पियम किसके बारे में बात करेगा? इज इट गोइंग टू टॉक अबाउट पाली ग्रामर, प्राकृत ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, और एक्सक्लूसिवली अबाउट तमिल ग्रामर? एक्सक्लूसिवली अबाउट तमिल ग्रामर. ठीक है, तो यहाँ पे वो वाइड स्पेक्ट्रम, बर्ड्स आई व्यू है, वो नहीं देखने के लिए मिलेगा. इनफैक्ट ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स है ना, they have an inquisitive mindset and they are going to be culture neutral. So the cultural identity of the people that they are interacting with, that is not going to greatly color their account of India. Rather, they are going to focus on diversity. They are going to give rather equal attention to all linguistic communities, all cultural groups. ठीक है, तो कल्चर एग्नोस्टिक थे, इक्वल अटेंशन देंगे सबको. ठीक है, एंड सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल, द काइंड ऑफ कैटलॉगिंग दैट लेट्स से Al-Baruni has done about the various languages and dialects prevalent in different parts of India. Has any Indian author done that? नहीं. तो लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. एंड comparatively, are these works going to have weaker critical quality or stronger critical quality? Stronger critical quality. एक तो bias नहीं है, secondly they are not invested in India.
तो जो अच्छा है उसको दिखाएंगे, जो बुरा है उसको भी दिखाएंगे। दे आर ऑल्सो गोइंग टू कंपेयर इंडिया अगेंस्ट अदर सोसाइटीज, अदर सिविलाइजेशंस, एंड ऑल्सो हाईलाइट इंडिया शॉर्टकमिंग्स एंड स्ट्रेंथ्स। ठीक है, तो क्रिटिकल राइटिंग के नजरिए से भी ये इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्वियसली अगर आपको 3 या 4 पेजेस मिले हुए हैं, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू राइट ऑल ऑफ दीज, या फिर इसमें से सिलेक्टिवली कुछ कुछ पिक करना पड़ेगा? बट यू शुड हैव ऑल दिस इन योर आर्सेनल सो दैट यू नो कि मुझे कैसे कौन कौन सी चीजें इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट दोज आई शुड एम्फेसाइज। जो कम इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट इफ द क्वेश्चन इज ओनली अबाउट स्ट्रेंथ्स ऑफ फॉरेन लिटरेचर, देन ऑब्वियसली यू हैव एम्पल स्पेस, सबके बारे में एलैबोरेशन करिए। ठीक है, नाउ लिमिटेशंस। खूबियां तो जान ली, खराबियां क्या है? अरे यार, आप ये सोचो कि आप बुलेट ट्रेन में बैठ करके जा रहे हो एंड द सीनरी इज पासिंग बाय, राइट? आर यू गोइंग टू गेट अ डिटेल्ड पिक्चर, या फिर एक ब्लरी स्नैपशॉट मिलेगा? ब्लरी स्नैपशॉट मिलने वाला है। तो आर दीज अकाउंट्स वेरी रिलायबल? नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। ऑब्वियसली आप एग्जाम में वो ब्लरी स्नैपशॉट तो नहीं लिख के आओगे ना, वो एनालॉजी तो नहीं दोगे। तो ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन करके आप सब हेडिंग दे सकते हो, यू कैन एक्सपैंड फ्रॉम देयर। These people covered extensive distances, met different cultures, they confronted different cultures in relatively short periods of time. Therefore, their understanding about these systems was neither detailed nor accurate. कुछ limitations थे उसमें। और बताओ। जो एडवर्ड सईद बोलता है क्या, थ्योरी ऑफ ओरिएंटलिज्म, क्या क्या 3 एडजेक्टिव्स बताए थे उससे एसोसिएटेड मैंने? दे शो द ओरिएंट एज inferior, irrational and exotic। तो एक्सोटिसाइजेशन करते हैं, डिमिनिशमेंट करते हैं एंड इरेशनलाइज करते हैं इंडिया को। तो दे लुक एट इंडिया थ्रू द ओरिएंटलिस्ट गेज। ठीक है, और बताओ, और क्या कमी, शॉर्टकमिंग? भाई वो, they come to India with their own understanding of how things work, how society operates, how the economy functions। उनके यहाँ पे मान लीजिए स्लेवरी के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स होंगे, that it is going to be brutal, that on a regular level slaves would be put to death, rebellions common होंगे। अब ये सारी चीजें उनको इंडिया में नहीं देखी, तो they would assume that slavery does not exist in India at all. Slavery in India was far more humane. It was much more regulated. Slaves enjoyed much greater rights in India. तो उनको लगा कि slavery तो है ही नहीं। तो there are some things which do not filter through the foreign lens properly। ठीक है, तो inadvertent distortions हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, अब वो बोल दो सिंपल लैंग्वेज में। और बताओ, और क्या खामी हो सकती है इनमें? या कुछ अकाउंट्स हियरसे पे बेस्ड हैं, कुछ अकाउंट्स जानबूझ करके एग्जैजरेट किए गए हैं। वाई? इनका टारगेट ऑडियंस कौन है? पीपल ऑफ इंडिया और देयर पीपल बैक होम? देयर पीपल बैक होम, सो दे वांट टू डिलिबरेटली project India as an exotic land of fabulous wealth, of fabulous beasts, right? Of seers and snake charmers। जादुई दुनिया है, लोग इरेशनल हैं, बेढंगे हैं, इस तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो
बिकॉज ऑफ देयर टारगेट ऑडियंस सम थिंग्स आर डिलिबरेटली डिस्टॉर्टेड, कुछ चीजों को एग्जैजरेट किया जाता है, तो देयर अकाउंट्स आर ऑफन फुल ऑफ एम्बेलिशमेंट्स एंड एग्जैजरेशंस। फॉर एग्जाम्पल मेगास्थनीज क्या बोलता है, इंडिया में सोना खोदने वाली चिड़िया, वो चींटियां मिलती हैं, गोल्ड डिगिंग एंड्स, राइट? he actually reports on this. He says that there is a particular group of people, particular tribe of people जिनके पैर हुब्स की तरह होते हैं एंड सर पे सींग होते हैं गोट की तरह, राइट? तो दिस इज आल्सो समथिंग दैट ही रिपोर्टेड। वो जानबूझ के कर रहा है क्योंकि इस तरह की चीजों को पढ़ेगा तो इंटरेस्ट आएगा, लेट मी लर्न मोर अबाउट इंडिया, लेट मी गो टू इंडिया, राइट? Megasthenes becomes immortal in Greek history by through these devices. और बताओ, और क्या खराबियां हैं? अरे भाई, is it always going to be possible to translate the things that they observed in India in perfect forms in their own languages, or are some things going to become lost in translation? Some things are going to become lost in translation. In fact, Al-Biruni admits to this. He was a scholar who was interested in the study of Indian philosophy and religions ना, तो कुछ philosophical concepts ऐसे थे कि इस्लामिक वर्ल्ड में उनका कोई वजूद ही नहीं था, and Al-Biruni was at odds to come up with the necessary vocabulary to express all these things. So he had to use the words that he had access to, but things got distorted over here. He was not able to relate whatever he wanted accurately because of the limitations of these languages. ठीक है, क्योंकि हर लैंग्वेज अपने एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इमर्ज होता है ना, तो वो वोकैबुलरी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो सम थिंग्स बिकम लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। एंड फाइनली, आफ्टर ऑल, ये जितने भी वर्क्स हैं, हाउ डू वी ग्लीन historical information from them? Historians have to study it, they have to apply their historical methodology, their assumptions, their biases, etc. These things are also going to seep in, and यहाँ पे एक additional layer of bias emerge हो जाएगा, क्योंकि historian को not only does he need to interpret this work, first he needs to translate these works, ठीक है? And then he needs to apply another filter that these people are talking about India of that period, so he has to make guesses, अच्छा इसके बारे में हो सकता है बात कर रहे हो, ठीक है? तो मल्टीपल लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेशन होता है। तो डू यू गेट नॉलेज अबाउट इंडिया एज इट वाज और एज इट अपीयर्ड टू बी थ्रू ऑल दीज वेरियस फिल्टर्स? एज इट अपीयर्ड टू बी थ्रू ऑल दीज वेरियस फिल्टर्स। तो फिल्टर्ड नॉलेज, या फिर यू कैन से प्रॉब्लम्स इन इंटरप्रिटेशन, ये होता है। समझ में आया है? आगे का इलैबोरेशन खुद हो जाएगा, ट्राई टू राइट दिस आंसर ऑल्सो। चलें आगे। So I believe through this we have covered all these things ना, हो जाएंगे चारों? Now, critical evaluation of literary sources. तो strengths तो you know कि what are the various aspects of life they can reveal. They can reveal concepts about details about things such as literature, literary sources किस तरह के historical information बता सकता है हमें? Political history, economic history, social history, cultural history, administrative details, important events, royal policies,
changing attitudes of society, changing dynamics of society, the emergence and fall of religious communities, the transformation of the linguistic composition of India, etc. बहुत सारा information हमको यहाँ से मिल सकता है, highly detailed, well catalogued, right? But we need to be able to also highlight limitations. तो क्या limitations हैं? One of the foremost challenges in the use of literary sources is the problem of textual layering and interpolation. And उसी के साथ एक associated problem होता है stratification का. So what do we mean by textual layering and interpolation? Yeah, addition, reduction. So these works are usually composed over long periods of time, and एक author नहीं होता है. During different time periods in different regions, multiple people are shaping these literary traditions or shaping these books, right? And therefore, what happens as a result? It becomes very difficult for the historian to point out and identify which portion, which information belongs to which period. ठीक है, that is one thing. उसी से associated problem of stratification है. Now, as these books travel through time and space, not only are they confronting new scholars, but new ideologies, new pressures, new priorities. तो आइडियोलॉजिकल चश्मा जो है वो भी बदलता रहता है. अब ये इमेजिन, ये अंडरस्कोर करना कि किस पीरियड में इस किताब को कितना थरली चेंज किया गया है, दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. तो आप ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ये तो डिटरमिन कर सकते हो बाय द यूज ऑफ फ्रेज, बाय द टाइप ऑफ वोकैबुलरी, बाय द सिंटैक्स, ग्रामर एटसेट्रा, कि कौन सा पोर्शन किस एज में लिखा गया होगा. फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू अ पैसेज फ्रॉम शेक्सपियर्स वर्क, विल यू नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई आज का गाना नहीं है या उस जमाने का गाना है? आसानी से कर लोगे, राइट? तो वो वाला तो फिर भी कर सकते हैं, बट ये आइडियोलॉजी कौन सा पहले लगाया गया, कौन सा बाद में लगाया गया, किस ऑथर ने किया, that becomes extremely difficult. This is one major flaw. Then a further limitation arises from the subjectivity of the literary evidence. Why is there such degree of subjectivity? Every text reflects the worldview, social location and ideological orientation of its author or compilers. मिशेल फुको ने क्या बोला था? पावर नॉलेज. ठीक है, आओ ये आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ऑथरशिप तो वीक है इंडियन सोर्सेस की, तो कौन से एंगल से पावर नॉलेज यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, दैट बिकम्स डिफिकल्ट. Religious texts often seek to uphold specific doctrines, political treatises, many legitimize particular forms of authority, while courtly literature frequently glorifies rulers and patrons. Consequently, literary sources reveal not merely historical realities but also contemporary perceptions and aspirations and prejudices. ठीक है, so they reveal all these things. All of them come with their own baggage. ऑब्जेक्टिव राइटिंग के प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, सब्जेक्टिव राइटिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं. बायसेस, प्रेजुडिसेस, प्रायोरिटीज, इंटरेस्ट, ये सारी की सारी चीजें इसमें रिफ्लेक्ट होंगी. फर्दर, अनदर मेजर शॉर्टकमिंग is that most Indian literature, it falls into the category of normative literature, idealistic literature rather than descriptive literature. So what is described in this? Things as they were or things as they should be? Things as they should be. So much of ancient Indian literature, especially Dharma Shastra, Smritis, religious texts, were prescriptive in nature. These works describe how society ought to function rather than how it actually functioned. Therefore, extracting evidence regarding political institutions, economic relations, or social practices, if we are relying on these books for this thing, are we ever going to get how things actually existed or how scholars believe they should exist? They should exist. For example, 100,000 years later, somebody gets hold of the Constitution of India, right? उसको लगेगा क्या मस्त यार, एकदम धरती पे स्वर्ग बना हुआ है, so many rights, so many guarantees, such great limitations on the state. But यहाँ पे आकर के देखो, right?
दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है. The thing is that while the text might present an idealized picture, it may not necessarily match with the lived experience of the people. Therefore, extracting evidence regarding political institutions, economic relations, or social practices require careful scrutiny and corroboration with other forms of evidence such as inscriptions, coins, and archaeological remains. And finally, another limitation is the tendency of the literary text to privilege certain social groups while marginalizing others. तो group bias या class bias भी यहाँ पे आता है. Most Brahminical literature was composed by the educated elites and therefore primarily reflects elite concerns and perspectives. Similarly, Buddhist and Jain texts, despite offering alternative viewpoints, were shaped by monastic institutions and their ideological priorities. The lives of peasants, artisans, women, and other subaltern groups often remain only indirectly visible within these sources. तो direct representation कम मिलता है इनको. Clear है? Now, because of this, what is the takeaway? जो last point है कि बाकी जो groups हैं, marginalized groups, they become less visible. So does this mean that actually they were marginalized या फिर they were still contributing? They were still contributing. So if we rely excessively on literature, are we going to get an accurate picture of the past or an inaccurate picture? Inaccurate picture of the past. ठीक है? So these are the shortcomings. Take down a question. Critically evaluate. Literary sources for the reconstruction of early Indian history. $15 marker. हो पाएगा? What do we have to do here? Once again, strengths and weaknesses, strengths and limitations highlight करने हैं. Now, recently there have new trends have emerged in the use of literary sources for recreating the past. तो कुछ नई methodologies adopt करी गई हैं which are being applied to revisit these literary sources. The idea over here is to use these literary sources to their fullest extent in order to create as accurate a picture of ancient India as possible. तो sources same रहेंगे, बस उसको देखने के लिए लेंस बदल गया है, चश्मा बदल गया है. ठीक है? Now, modern historiography has significantly expanded the methods employed in analyzing literary evidence. Historians no longer treat texts merely as repositories of information. Instead, they examine them as products of specific social and historical circumstances. Michel Foucault भी क्या बोलता है? That these are carefully curated representations of the past, not actual historical reality. ठीक है? तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है. दैट इज वाई उसको फ्रेश टूल्स के साथ अप्रेस करने की रीअप्रेस करने की जरूरत है. One important development has been the sociological study of the texts, which emphasizes what? The relationship between a text and its author, patrons, and intended audience. ठीक है? So how has the social background of the author, the priorities of the patrons, and the expectations of the audience shaped the narrative given by the text? This has become an important area of focus. The social background of the author, the institutional setting in which a text was produced, and the interest it sought to serve are now considered essential for historical interpretation. Now, secondly,
a more interdisciplinary approach is being taken for the study of these sources. Equally significant has been the adoption of interdisciplinary approaches. So what does it mean, interdisciplinary approach? For example, कालिदास का कोई टेक्स्ट है, earlier it was read for what? Simply for its literary value, literary masterpiece की तरह. But now the sociological lens is being applied to it, the anthropological lens is being applied to it, the political lens, the economic lens, the international relations lens. तो ये सारी चीजों को अप्लाई किया जा रहा है. Why? Because these kinds of works are what? A representation of how life ought to be or how life actually was. So these can give us very important insights into various other dimensions of life and a composite picture create किया जा सकता है. Otherwise, एक political, मान लीजिए political work है, if we focus only on the political content, are we going to actually receive the kind of detail that we want, or will we have to place those political concepts, those political tensions, those political opportunities, pressures, attitudes within the existing geographical, economic, social and cultural landscape? तब accurate picture मिलेगा. It is only then that we'll be able to make sense of it. ठीक है? तो insights from sociology, anthropology, economics, political science, cultural studies are increasingly employed to decode literary narratives. Such approaches enable historians to uncover underlying social structures, economic processes, and cultural assumptions embedded within textual traditions. ठीक है? इसका awareness हमको इसी interdisciplinary approach से मिल सकता है. Then advances in philology and historical linguistics have further enriched textual analysis. What is philology? The study of ancient languages. ठीक है? The study of language, vocabulary, grammatical forms, stylistic variations, etc. help historians in doing what? वो जो layering and historical interpolation का problem है ना, उसको solve करने के लिए मदद करते हैं. Identify different chronological layers within text and trace cultural interactions across regions as well. ठीक है? तो एक तो layering वाला problem solve करने के लिए, and secondly in identifying that how different linguistic communities came into contact with each other, diffusion कैसे होता है, exchange कैसे होता है, न्यू वोकैबुलरीज कैसे शेप होती हैं, ग्रामेटिकल फॉर्म्स कैसे इमर्ज होते हैं, न्यू लिंग्विस्टिक ट्रेडिशंस कैसे इमर्ज होते हैं, एंड फाइनली उसके बेसिस पर एक नया लैंग्वेज और उसका प्रॉपर लिटरेचर कैसे इमर्ज होता है. तो माइग्रेशन, ट्रेड एटसेट्रा, ऑल ऑफ दीज आर आल्सो गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड अलोंग विद द स्टडी ऑफ लैंग्वेज ना. तो वो आप ये बोल सकते हो दैट द डिफ्यूजन ऑफ लिंग्विस्टिक ट्रेड्स अक्रॉस वेरियस रीजन्स, इट एक्ट्स लाइक एन एक्सरे. तो आपको आइडिया दे सकता है दैट अगर ये एक्सचेंज हुआ है तो यानी कि पीपल वर आल्सो इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, मे बी सोशल रिलेशंस वर बीइंग एस्टैब्लिश्ड, हायरार्कीज एस्टैब्लिश हो रहे होंगे, अप एंड डाउन रिलेशनशिप चल रहा होगा, मे बी सम ट्रेड वाज आल्सो गोइंग ऑन, मे बी सम कॉन्फ्लिक्ट आल्सो मे हैव टेकन प्लेस. ठीक है? तो इट हेल्प्स पुट हिस्ट्री इनटू प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट. राइट. मोर रिसेंटली, techniques derived from digital humanities and computational analysis have begun to supplement traditional textual criticism. तो अब computer, AI, etc., that is also being used. Statistical analysis of vocabulary, linguistic patterns, and textual variants has opened new possibilities for dating texts, identifying interpolations, and understanding process of textual transmission, etc. What were the mediums through which this language, this linguistic trait, these sounds, these words traveled from one region to the other region? Okay? It can also give us useful insights into past migrations of people also. ठीक है? For example, आर्यंस के बारे में एक मेजर डिबेट है ना, क्या? Were they outsiders or did they originate in India and migrated to other regions from India? तो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी एंड आउट ऑफ इंडिया थ्योरी.
ये जो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी वाले हैं, दैट मीन्स दैट दे आर फॉरेनर्स एंड दे केम टू इंडिया, ये एक चीज बोलते हैं दैट जो भी आर्यंस के डिसेंडेंट्स थे, दे प्रेजेंटली स्पीक द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, राइट, जिसमें संस्कृत तो है ही, बट उसके इंडिया में जितने भी डिसेंडेंट्स हैं, तो हिंदी हो गया, प्राकृत हो गया, पाली हो गया, ऑल द वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो वो सारे आते हैं. Apart from that, there are a number of foreign languages also, such as Farsi or English or German, Latin, French, etc. ये सारे इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के आते हैं. नाउ इंटरेस्टिंगली, इट इज ओनली इन द इंडियन लैंग्वेजेस, जो संस्कृत के इंडियन डिसेंडेंट्स हैं, that you find large scale profusion of retroflex sounds. Retroflex sounds कौन से होते हैं? Those sounds which are made by the tip of the tongue striking the upper palate of the mouth. ट ठ ड ढ, ये वाले केवल हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, असमी, इन्हीं सब में मिलते हैं. बाहर के जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, फारसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया, उसमें नहीं मिलते हैं या फिर बहुत कम मिलते हैं. ठीक है. So the thing that they are trying to portray is that had Sanskrit migrated outside India, away from India, so all these terms, all these sounds should also have traveled. So they should equally be present in those other languages also. But वो नहीं है. That means that Sanskrit या फिर उसका जो predecessor language spoken by the early Aryans था, that must have come to India from outside. And यहाँ पे जो local communities थी, who were possibly speaking some version of a Dravidian language, तो तमिल का कोई earlier version रहा होगा, जिसमें retroflex sounds बहुत ज्यादा मिलते हैं, उसके साथ interaction हुआ, and it is from these Indic languages that they adopted these retroflex sounds. तो डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन क्या है लैंग्वेज का? फ्रॉम इंडिया टू द आउटसाइड और फ्रॉम द आउटसाइड टू इंडिया? फ्रॉम द आउटसाइड टू इंडिया. ठीक है. इस तरह का एनालिसिस कैसे पॉसिबल होगा? लैंग्वेज की स्टडी के थ्रू, कंप्यूटेशनल एनालिसिस के थ्रू, डिजिटल एनालिसिस के थ्रू, राइट? So these are the new possibilities that have started to emerge. Clear है? Now, likelihood of this appearing in the examination वो लिमिटेड है, बट इसका अवेयरनेस होना जरूरी है, बिकॉज हियर वी आर ट्राइंग टू लर्न हाउ हिस्ट्री इज एक्चुअली मेड. तो क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या नए टूल्स हैं, वो अगर समझ जाते हो, यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस अवेयरनेस इन द सब्सिक्वेंट पोर्शंस. क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आई होप दिस मच इज क्लियर. प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑफ फॉरेन अकाउंट्स, अरे वही की बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजों को समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी भी नहीं है, डिटेल भी नहीं. ठीक है. चलिए, नाउ कमिंग टू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. क्या होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज? फिजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट. ठीक है. कौन कौन से तरह के हो सकते हैं? बायोलॉजिकल रिमेन्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल skeletons, fossils, etc. These kinds of things. और mounds हो सकते हैं, which can give you important details about settlement, geography, habitation pattern, etc. And जो mounds हैं, यहाँ पे केवल structures नहीं मिलते हैं, you get a number of artifacts also, such as pottery, tools, coins, etc. Right? Then monuments भी आपके एक तरह के artifacts हो सकते हैं, paintings, sculpture, etc. These are also important visual artifacts, visual sources of history. ठीक है. Now we need to see what kind of information can be gleaned from these kinds of sources. समझ में आया ना कि हम archaeological sources किसको किसको बोल रहे हैं? Now, mounds constitute one of the most important categories of archaeological evidence. Most ancient settlements, after centuries of habitation, abandonment, and rebuilding, appear as elevated accumulations of cultural debris known as archaeological mounds or archaeological tells. ठीक है. तो टेल कहीं वर्ड हुआ है तो इट इज
same as mound, don't get confused. The significance of mounds lies in the fact that they preserve the material remains of successive generations and often contain evidence spanning several centuries. तो एक ही साइट में आपको केवल एक जनरेशन से एसोसिएटेड मटेरियल नहीं मिलेगा, सेवरल जनरेशन से मटेरियल मिल जाएगा. फायदा क्या होगा इसका? You will be able to see how the material culture of that place has evolved over time, how the cultural artifacts have changed over time, how technology has changed over time, how the quality of life has changed over time, how the size of the settlement has changed over time. कहीं पे बड़ा होगा, कुछ layers में shrink हुआ होगा, right? So these kinds of things वो यहाँ से possible हो जाता है mounds की study से. Archaeologists generally classify mounds into two broad categories. कौन कौन से? Monocultural mounds and multicultural mounds. So these mounds contain the remains of monocultural mounds of a single cultural phase. Such sites are particularly valuable because they provide a relatively undisturbed picture of a specific culture and facilitate detailed reconstructions of its settlement pattern, economy and technology. तो आप लोगों को एक आइडिया देता हूं यहां पर. That suppose we need to create a clear picture of the mature हड़प्पन period. ठीक है, अब हमारे पास दो साइट्स हैं जहां पे वर्टिकल एक्सकवेशंस हुए हैं. One is a monocultural site and the other is a मल्टीकल्चरल साइट, राइट? अब मल्टीकल्चरल साइट है अगर ये, तो यहां पर आर यू गोइंग टू फाइंड ऑक्यूपेशनल रिमेन्स ओनली इन अ सिंगल लेयर और मल्टीपल लेयर्स में? मल्टीपल लेयर्स में मिलेंगे. तो जो सबसे नीचे वाले लेयर होगा मे बी दैट बिलोंग्स टू द नियोलिथिक पीरियड. तो यहाँ पे आपको नियोलिथिक का कुछ मटेरियल मिला है. मे बी नियोलिथिक फेज के बाद दिस साइट वाज अबैंडन्ड, तो एक स्टेराइल लेयर मिलेगा. उसके ऊपर एक कैल्कोलिथिक लेयर मिला है. मे बी these Chalcolithic people become technologically more advanced, organizationally more sophisticated, and they arrive into the early Harappan age. ठीक है, एंड अर्ली हड़प्पन के ऊपर मच्योर हड़प्पन एज, राइट? लेकिन ये जो मच्योर हड़प्पन के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसके ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट है, लेट हड़प्पन एज, एंड उसके ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट है, पोस्ट हड़प्पन एज. तो is this the most suitable candidate to get the best and undisturbed picture of the mature Harappan age? नहीं, क्योंकि यहां पर जो भी आपको रिमेन्स मिलेंगे they will have been disturbed by the people who came later. यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ करेंगे, कहीं पे लेवलिंग करी जाएगी, मे बी सम ऑफ द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स उसको यूज किया जाएगा. मच्योर हड़प्पन पीरियड बर्न्ड ब्रिक्स वर यूज्ड वाइडली, तो उन ब्रिक्स को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए यूज किया जा सकता है, राइट? तो ये जो इसका इमेज मिलेगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी, यू कैन से, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, डिस्टॉर्टेड इमेज मिलेगा. बेहतर क्या होता कि एक ऐसी साइट जहां पर केवल एक लेयर में रिमेन्स मिले हुए हैं, दैट इज द मैच्योर हड़प्पन एज. उसके पहले हो तो कुछ चलेगा सब, बट दिस इज द पीरियड दैट वी आर इंटरेस्टेड इन ना. इसके बाद कोई ऑक्यूपेशन नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स later generations or later communities should not have disturbed or destroyed the archaeological remains at
this particular site. That is the point we are trying to make here. Clear? And then we have multicultural sites. These contain multiple occupational layers belonging to different cultural periods. इनका भी अपना एक फायदा होता है, नुकसान तो आपने देख लिया, फायदा क्या होगा? एवोल्यूशन को ट्रेस करने के लिए these kinds of sites are most useful. Through stratigraphic excavation, archaeologists can trace the sequence of cultural development over time. Such mounds are invaluable for establishing chronology and studying long-term historical change. Clear? Now, the excavation of mounds yields a wide variety of material remains, including pottery, tools, weapons, ornaments, terracotta figurines, seals, beads, food remains, and structural features. And everything tells a story, right? It is through the study of such remains that archaeologists have reconstructed major cultural traditions such as the Harappan civilization, PGW culture, NBPW culture, megalithic cultures of peninsular India. So the study of all these cultures depend primarily upon agriculture, and agriculture के अंदर भी सबसे ज्यादा important कौन सा type, sorry, on archaeology, and within archaeology what type of evidence? Mounds, right? From a theoretical perspective, mounds illustrate the principle that archaeology is fundamentally concerned not with isolated artifacts, but with the entire assemblage of artifacts, but with the contextual relationship between artifacts, structures, and stratigraphy, which together reveals patterns of human behavior and cultural evolution. Now, एक मेजर ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, इमर्ज हो क्या रहा है? इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड नाउ, दैट इज instead of focusing upon singular artifacts or monuments, आर्कियोलॉजी में फोकस किसकी तरफ शिफ्ट हो गया है? ओवर लॉन्ग टर्म एनालिसिस, तो स्ट्रैटिग्राफिक एनालिसिस, एंड इसमें फेवर किसको किया जाएगा? सिंगुलर आर्टिफैक्ट्स या सिंगल मॉन्यूमेंट्स या स्ट्रक्चर्स और द एंटायर असेंबलेज, तो वाइडर जियोग्राफी पे नजर दौड़ाई जाएगी टू अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस टुक प्लेस. ठीक है, तो सेटलमेंट आर्कियोलॉजी एंड long term historical processes. Modern archaeology increasingly studies settlements rather than isolated monuments. This reflects the influence of the Annales school. Annales school French Marxist scholars का historical school है, तो simply इनको Marxist भी बोल दो तो चलेगा. Fernand Brauddel's concept of the long durée. Long durée मतलब long duration, which emphasizes long-term geographical and environmental structures over short political events. ठीक है? For example, Harappan civilization cannot be understood merely through kings and dynasties. Rather, Harappan civilization को समझना है तो क्या, किसके ऊपर फोकस होना चाहिए? We should examine river systems, ecological adaptation, trade routes, agricultural organization, and urban planning as well. Clear? Likewise, PGW settlements in Western Ganga plains have been correlated with later Vedic expansion. So later Vedic texts mention that Aryans migrated towards the east. Prince Videha Madhava, with the use of fire and iron, cleared the forest, settled on the borders, on the banks of the Sadanira, अपने पूरे क्लैन के साथ वहां पे जाके बस गए थे. इसका क्या आर्कियोलॉजी में कोई प्रूफ मिलता है? यस, तो वेस्टर्न गैंजेटिक प्लेन्स में एक्सटेंसिव एक्सकवेशंस हैव रिवील्ड अ पर्टिकुलर कल्चर नोन एज द पीजीडब्ल्यू कल्चर, पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर. एंड ये कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं? रफली वही लेटर वैदिक एज के, तो 1100 बीसी टू 1000 बीसी या फिर 900 बीसी के अराउंड. दिस इंडिकेट्स दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड the Aryans had migrated out of the Indus Valley. They were already in the Gangetic Valley, and subsequently वो ईस्टर्न इंडिया में जाके भी सेटल हो जाएंगे. ठीक है. Excavations at Hastinapur, Atranji Kheda, etc. reveal increasing sedentary agriculture and iron use, helping historians reconstruct transitions from tribal polities into tribal kingdoms, into territorial kingdoms. तो यहाँ पर
what is the focus upon now within archaeology? To understand the historic picture in a momentary snapshot, या फिर पूरा जो फिल्म है वो देखना है हमको, वो फिल्म है हाउ इट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम, राइट? तो एक इमर्जिंग प्रोसेस की तरह यहां आर्कियोलॉजी को यूज करना है हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के लिए. Thus, archaeology studies historical processes rather than isolated events. Then, another important type of archaeological evidence is inscriptions. क्या होते हैं ये inscriptions? Written text left behind on some hard surface, maybe some rock face, some cliff, the wall of a monument, or maybe some other structure, copper plate, etc. ठीक है? तो the study of inscriptions क्या बोलते हैं उसको? Epigraphy. Inscriptions are among the most valuable archaeological sources because they often provide direct and contemporary evidence, right? तो ये inscriptions उस जमाने के होते हैं जब ये मॉन्यूमेंट बना होगा, या फिर जब वो पॉलिसी आई होगी, जब वो ऑर्डर दिया गया होगा, राइट? एंड डायरेक्ट होता है, राइट? तो दैट मीन्स इट इज ऑफन द विल ऑफ द रूलर दैट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड थ्रू दिस एविडेंस. Regarding political authority, administration, religion, economy, society, etc. And unlike literary texts, which are susceptible to later interpolations and redactions, inscriptions are usually fixed records issued for specific purposes. Broadly, they may be categorized into royal and private inscriptions. Royal inscriptions, सबसे पुराने that we have access to. There are some pre-Ashokan Mauryan inscriptions, लेकिन जो largest assemblage हमको significant numbers में मिलने लगता है, that belongs to the Ashokan period. What kind of information can be gleaned from these inscriptions? Administrative details, political details, economic structures के बारे में, different communities, regions के बारे में, religion के बारे में, ruling ideology के बारे में, अशोका धम्मा के बारे में, सब के बारे में पता लगता है inscription से. Yes. So all these things. Further, the location of these inscriptions, जहां पे inscriptions present हैं, that means that these places were part of Ashoka's empire. We can learn about the extent of the Mauryan empire, administrative machinery, nature and objectives of Dhamma, Ashoka's concept of kingship and governance, relationship with neighboring kingdoms and foreign powers also. Okay? And following the Mauryan period, inscriptions would be also left behind by later kings, right? And ये generally किस form में होंगे? They would be in the form of prashastis. What are prashastis? Panegyrics, यानी कि eulogistic inscriptions, which are praising or crediting the ruler for some great achievement or some great service to the common people. ठीक है? Composed to glorify rulers and legitimize their authority. And important examples include हाथी गुम्फा inscription of खारवेल, कहां पर लोकेटेड है ये? ओडिशा में. जूनागढ़ inscription of रुद्रदमन, कहां है ये? गुजरात. And the Allahabad pillar inscription, प्रयाग प्रशस्ति of समुद्रगुप्त. ठीक है? These inscriptions are invaluable sources for political history, and although they must be critically analyzed because they often exaggerate royal achievements and function as instruments of political propaganda. But हमने कल क्या देखा था? Are these inscriptions only political documents or administrative manuals? No, they are simultaneously other things. Ideological manuals भी हैं, political manuals भी हैं. जो power knowledge वाला जो concept था वो यहाँ पे apply होता है. ठीक है? Particularly important category of royal inscriptions consist of copper plate charters. Copper plate charters क्या होते थे? ताम्रपत्र. क्या होता है ये ताम्रपत्र? Yeah, they usually were were made to record land grants made by rulers to various individuals, maybe some monk or some priest or some monastery or maybe some feudal lord, etc. Right? Which recorded land grants made by rulers to Brahmins, temples, religious institutions, etc. And R.S. शर्मा ने ये लैंड ग्रांट्स के एविडेंस को यूज करके
अपना एक पूरा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क खड़ा कर दिया. नेम ऑफ दिस फ्रेमवर्क इज इंडियन फ्यूडलिज्म. ठीक है, arguing that the increasing frequency of land grants reflected broader transformations in agrarian relations and political authority as well, right? Then we have private inscriptions. Usually ये किस तरह के inscriptions होंगे? These were usually votive inscriptions. votive की जगह आप दूसरा नाम भी यूज कर सकते हो, डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस. ठीक है, तो पार्क में बेंच के ऊपर भी आप देखते होगे ना कि इंस्टॉल्ड बाय सच एंड सच इन दिस ईयर. कोई मंदिर जाता होगा, मस्जिद जाता होगा, तो वहां पे भी टाइल पे लिखा होता है दैट दिस रेनोवेशन वाज डन बाय दिस पर्सन, राइट? इस ईयर में इतना पैसा दिया गया था. नाउ द सेम काइंड ऑफ थिंग वाज हैपनिंग बैक देन एज वेल. ठीक है, प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस वर इशूड बाय मर्चेंट्स, गिल्ड्स, monks, pilgrims, and ordinary devotees. These inscriptions are generally found in temples, caves, stupas, and pilgrimage centers. Most private inscriptions are donative or commemorative in nature. ठीक है, recording gifts made to religious establishments. They provide valuable insights into, first of all, patterns of patronage. Earlier belief क्या था कि जितने भी ये religious monuments है, कौन बनवा रहा है सबको? किंग बनवा रहा है. बट रियलिटी क्या है? But it was not only the king, it was the laity, these guilds, merchants, etc. They were also playing an important role. Social mobility also reveal होता है यहाँ से. क्या मतलब हुआ? That those groups which were earlier considered to be marginalized, they have enough money to patronize these monuments, right? Indicating that they have already earned money and they are doing religious patronage in order to do what? In order to get social recognition, religious legitimacy. ठीक है, तो mechanism of social mobility is also revealed. Religious practices कि भाई, if you try to understand religion only through literature, तो बुद्धिज्म किस तरह का दिखेगा आपको? Extremely austere, monastic, highly organized, exclusivist in nature दिखेगा. But if you look at these inscriptions, what does that show you? That was there complete separation between the Buddhist experts and the lay people, या फिर was the Sangha actively reaching out to the lay people? It was reaching out to the lay people. यहाँ पर जो भी स्तूपास हैं, तोरण गेटवेज हैं, what are you going to find? You are going to find inscriptions, donative inscriptions, जिसमें बुद्धिस्ट संघा के मेंबर्स का नाम भी लिखा हुआ है, मंक्स का, भिक्खुनीस का, नन्स का नाम लिखा हुआ है, कॉमन पीपल का भी नाम लिखा हुआ है. तो दैट मीन्स संघा was actively involved in the organization of this construction activity, religious practice में इन्वॉल्व था. तो वही है कि किताबी पिक्चर एक हो सकती है एंड एक रियल पिक्चर, हाउ रिलीजन वाज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड, वो हमको यहां से बेहतर देखने के लिए मिल पाएगी. Merchant activity is also going to be revealed, that in which region which guild was active, which group of merchants made what kind of grants, right? Urbanization and trade networks, most of these monuments are going to be located in hinterland या फिर busy trade routes पर, so that they could be frequented by travelers, बड़े cities में present होंगे, highly visible होंगे, and this would also indicate कि trade networks कहाँ से गुजर रहे थे, what were the important trade nodes, and the relationship between the laity and the religious institutions. This we have already explored. Now, as Romila Thapar observes, private inscriptions often illuminate aspects of social history that may remain invisible by royal accounts. अब रॉयल अकाउंट्स में क्या आपको इतने रिच डिटेल में कॉमन लाइफ्स के बारे में आइडिया मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस के थ्रू ही मिलता है. देन वी हैव द स्टडी ऑफ कॉइन्स. व्हाट इज इट कॉल्ड? न्यूमिस्मैटिक्स. एंड व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स कैन कॉइन्स रिवील? रूलर्स के बारे में आइडिया मिल सकता है, क्योंकि यूजुअली सिक्कों के ऊपर रूलर्स का नाम, मे बी देयर इमेज, वो सब छपा होगा. व्हाट एल्स? इकोनॉमी के बारे में आइडिया मिल सकता है. कैसे? Depending on the metallic quality, purity of the coin,
अगर हाई प्योरिटी है दैट मीन्स इकोनॉमी वाज फंक्शनिंग वेल, देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ प्रेशियस मेटल्स. बट इफ देयर इज डिबेसमेंट, अगर मिलावट ज्यादा है दैट मीन्स there is shortage of bullion, trade may not be doing very well, revenue may not being generated, right? So that is why कुछ मिलावट करना पड़ गया है. Then the volume of coinage, that is also indicative कि भाई अगर बहुत हाई वॉल्यूम में स्मॉल डिनोमिनेशन के कॉइन्स हैं, व्हाट वुड दैट इंडिकेट? 1 रुपए के बहुत ज्यादा कॉइन्स हैं. अब 1 रुपए का कॉइन कौन यूज करेगा ज्यादा फ्रीक्वेंट बेसिस पर? अमीर आदमी या गरीब आदमी? गरीब आदमी करेगा, छोटा कॉइन है, राइट? अमीर आदमी क्या यूज करेगा? 500 रुपए का नोट यूजुअली यूज करेगा, उसके पास चेंज ढूंढोगे भी तो नहीं मिलने वाला है, राइट? तो वो हाई वैल्यू हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में. और ये जो स्मॉल डिनोमिनेशन कॉइन्स हैं, ये कैसे ट्रांजैक्शंस में यूज होंगे? हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस और लो वैल्यू डेली ट्रांजैक्शंस. low value daily transactions. So this also indicates the level of penetration of coinage. Monetization किस level तक penetrate कर चुका था. If you find that a large amount of coins are being discovered from rural contexts, what would that indicate? Rural economy was also getting monetized, right? So a rural urban nexus was emerging, a continuum was being established, there was a synergistic relationship between the cities and the villages. Otherwise अगर coins नहीं मिले हैं तो relationship कैसा होगा? Symbiotic होगा या parasitic होगा? Parasitic होगा. या तो barter के ऊपर based है या फिर parasitic relationship है. The cities are only extracting surplus from the villages, giving nothing back in return. तो डायनामिक समझ में आता है, तो इकोनॉमी के बारे में वेरी यूजफुल इनसाइट्स मिल सकते हैं. देन फॉरेन ट्रेड, यस. टेरिटोरियल एक्सटेंट, यस. आज तक हमारा सिक्का वहां तक चलता है, सुना होगा ना सबने. तो दैट काइंड ऑफ थिंग. व्हाट एल्स? रिलीजियस पेटनेज, राइट? रिलीजियस आइडियाज, कल्चर. तो ये सारी चीजें हमको यहाँ से देखने के लिए मिल जाती हैं. लिटरेचर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में आइडिया मिल सकता है, बिकॉज दीज कॉइन्स यूजुअली कैरी इंस्क्रिप्शंस आल्सो. ठीक है, तो ऑल दीज ग्रेट इनसाइट्स वी कैन गेट फ्रॉम कॉइन्स. देन वी हैव अदर एग्जांपल्स सच एज आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स. तो आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, इन तीनों को हम मिला करके क्या बोल सकते हैं? विजुअल सोर्सेस बोल सकते हैं. एंड if you look at the new edition of Pinder Singh, जो last year या last year अभी आया है recently, वहां पे she has given special focus to the use of visual sources. तो chances ये हैं कि visual sources के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. एंड क्वेश्चन कैसा आएगा? कि विजुअल सोर्सेस को यूज करने की वजह से how is history being reshaped? How is the picture of ancient India being reshaped, reimagined, reconfigured? How are views, assumptions about ancient Indian religion, ancient Indian polity, ancient Indian culture, ancient Indian science, ये सब कैसे रीशेप हो रहा है? ठीक है, तो फॉर दिस यहां पर ये देखो, I have a small presentation. Let us go through this. How visual evidence rewrote the history of ancient Indian religion. अब दो केस स्टडीज हमने ली हैं. अर्ली बुद्धिज्म को कैसे रीइवैल्यूएट किया जा रहा है एंड गुप्ता पीरियड के रिलीजन को कैसे रीइमेजिन किया जा रहा है. ठीक है, तो द फर्स्ट केस स्टडी. नाउ इनिशियली एक प्रॉब्लम हाईलाइट करना जरूरी है, दैट रिलाइंग ओनली ऑन टेक्स्ट, उसकी वजह से the picture of religion, how that becomes distorted. So the textual bias in early Indology. For centuries, the history of ancient India was written almost exclusively from texts, that is Vedas, Dharmashastras and Pali canons. These were composed by whom? By male elite monastic or Brahmin authors. ठीक है, तो voices from below क्या वो यहाँ पे सुनाई देंगे? नहीं देंगे. This created a top down history prioritizing philosophical ideas and strict orthodoxies over the actual lived religious realities of the broader population. अब ये बताओ, ये जो टेक्स्ट हैं
are they descriptive in nature or are they prescriptive in nature? प्रिस्क्रिप्टिव है, नॉर्मेटिव है, आइडियलाइज्ड है, तो ये एलिट्स की आइडियोलॉजी का रिप्रेजेंटेशन है. दिस डज नॉट मीन दैट दिस इज हाउ रिलीजन वाज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड. रिलीजन हाउ इट वाज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड, तो वो कहां से पता लगेगा? व्हेन वी कंसल्ट अदर सोर्सेज, नॉन टेक्सुअल सोर्सेज, जिनको शेप करने में लोगों का एक कंट्रीब्यूशन. ठीक है. Integrating visual evidence, that is epigraphy, numismatics, architecture and iconography, forces a paradigm shift from the prescriptive ideals to descriptive realities. Okay? So that is how visual sources have started to reshape the picture of Indian religion in the past. From prescriptive ideals to descriptive realities. Now, लुक एट दिस. हमें यहाँ पे देखना क्या क्या है. जो टेक्सुअल रिकॉर्ड है उसके क्रिएटर्स कौन है, what is the historical perspective that they take usually, and what is their core area of focus, and we have to compare it against the visual sources. तो प्राइमरी क्रिएटर्स कौन है टेक्स्ट के? एलीट सेक्शंस, ब्राह्मण्स, मोनास्टिक अथॉरिटीज एटसेट्रा. एंड विजुअल सोर्सेस के आर्टिजनल गिल्ड्स, मर्चेंट्स, ले डोनर्स एंड रॉयल पेट्रन्स. तो ये वाले लोग हैं. तो आर दीज सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और डू दीज पीपल बिलोंग टू द लेटी? दे बिलोंग टू द लेटी. तो रिलीजियस कम्युनिटी के ये लीडर्स हैं या फॉलोअर्स हैं? फॉलोअर्स. समझ में आया? सेकेंडली, व्हाट इज देयर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव? ये किस तरह का टेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं? अ डिस्क्रिप्टिव वन और अ नॉर्मेटिव वन? Normative text. It is prescriptive. How the world should be ordered. And यहाँ पे क्या दिखता है? It is descriptive. How people actually spent wealth and practiced devotion. ठीक है. Core area of focus ये elites का कहाँ पे होगा? चाहे वो monastic elites हो, चाहे brahmanical elites हो. It will be on theology, ritual purity, philosophical doctrine. तो जिस चीज में उनका एक्सपर्टीज है उसी के बारे में बात करेंगे. राइट. एंड यहां पे विजुअल रिकॉर्ड में द फोकस इज ऑन पब्लिक पेट्रनेज, सिंक्रेटिज्म, डिवोशनल कल्ट्स एंड लिव्ड पाइटी, नॉट फिलोसॉफिकल पाइटी और प्योरिटी. ठीक है. तो ये हो गया एक छोटा सा कंपैरिजन. एंड देन पहला केस स्टडी, द विजुअल रियलिटी ऑफ अर्ली बुद्धिज्म. The foundational texts of Buddhism paint a picture about early Buddhism of world-renouncing ascetics. यानी कि बुद्धिज्म का मतलब त्याग, कंप्लीट त्याग. राइट. Austere monastic rules, living in severe deprivation, not enjoying life. Right. And royal decrees dictating the spread of the faith. That the state acted as the major agent of spreading Buddhism, especially under Ashoka and after. However, जो visual record है वो कुछ दूसरा ही कहानी बताता है. The stones tell a radically different story. For example, यहाँ पे clearly donor को identify किया जाएगा. And what is found? He is no king. He may be a merchant or maybe even a lady, woman है. ठीक है. We also get to know कि कौन से गिल्ड को बिलोंग कर रहा है ये, तो उसका गिल्ड का आइडेंटिटी भी क्लैरिफाई हो जाएगा. एंड हाउ मच मनी ही इज डोनेटिंग. तो ये तीनों चीजें आपको इन विजुअल सोर्सेस से, इस छोटे से इंस्क्रिप्शंस के थ्रू मिल जाएगा. कौन सा इंस्क्रिप्शन है ये? रॉयल इंस्क्रिप्शन और प्राइवेट इंस्क्रिप्शन? प्राइवेट, वोटिव इंस्क्रिप्शन. ठीक है. Secondly, what was the assumption regarding patronage of early Buddhism? कि patronage came exclusively and most forcibly from the state. Ashoka was the greatest patron, right? Early Buddhism assumption is that early Buddhism expanded primarily through imperial patronage like Ashoka and elite royal conversion. But what is the epigraphic evidence telling?
Thousands of localized inscriptions on stupa railings reveal a decentralized grassroots economic engine driven by non-royals. To the spread of Buddhism, was it a top-down process or was it a grassroots process? It was a grassroots process. ठीक है, इसमें क्या मेजर रोल स्टेट ने प्ले किया और डिड द पीपल ईगरली अडॉप्ट बुद्धिज्म बिकॉज इट अट्रैक्टेड देम? It attracted them, therefore they responded positively to early Buddhism. Now, look at how construction of religious monuments was patronized. तो स्तूप बनाना है तो बल्क ऑफ पेट्रनेज कहां से आ रहा है? सबसे ज्यादा मर्चेंट गिल्ड्स के थ्रू आ रहा है. देन monks and nuns are actually contributing, पैसा दे रहे हैं. बट अर्ली बुद्धिज्म में अगर केवल टेक्स्ट के बेसिस पर रिलाई करो तो what is the idea that you get about monks and nuns? They are ascetics, they have already renounced all wealth, so should they have any money left to donate? They should not have. But यहाँ पे clearly record किया है that this bhikkhu, this bhikkhuni is donating this much amount of money. And interestingly एक major patron class emerge होता है, that is lay women. So women contributed in large numbers. Based on the textual record of that period, what kind of a picture do you have of women? That women enjoying high status, financial independence, do they have the right to property? Do they have the power to discharge wealth on their own, or are they financially dependent? Financially dependent hai. But they are donating extremely large sums of money, indicating that women also enjoyed property rights. They could do with their wealth whatever they wanted. Over a third of early inscriptions record independent donations by women, contradicting textual assertions of financial dependence. And सबसे ज्यादा interestingly, if you look only at the religious literature, तो सबसे बड़ा पैटर्न कौन दिखाई देता है? रूलर अशोका. बट इफ यू लुक एट द पेटनेज रिकॉर्ड, यहां पे रॉयल्टी केवल ये छोटा सा रह जाता है. बल्क ऑफ द मनी, बल्क ऑफ द पेटनेज इज कमिंग फ्रॉम ले सेक्शंस, नॉन एलिट्स. ठीक है, फर्दर ये देखो, आर्किटेक्चर एज अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन. तो आर्किटेक्चर पहले क्या बोला जाता था कि जो आर्किटेक्चर वगैरह है ये किसका रिलीजन है? इज इट द रिलीजन ऑफ द क्लासेस, संघा बनवा रहा है, और इज इट द रिलीजन ऑफ द मासेस, लोग बनवा रहे हैं? तो लोगों को ही मतलब है ना कि पिलग्रिमेज करना है, पूजा पाठ करना है, दान वान करना है. मंक्स तो केवल फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व थे. तो इफ यू गेट दी ओनली द टेक्सुअल इंप्रेशन, तो क्या इमेज होता है? दैट देयर इज कंप्लीट डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू फॉर्म्स ऑफ रिलीजन. जो रियल ऑथेंटिक फॉर्म ऑफ रिलीजन है वो मोनास्टिक रिलीजन है, इट इज हाईली फिलोसॉफिकल. एंड जो कॉमन पीपल का रिलीजन है, इट इज हाईली रिचुअलिस्टिक, एंड देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू. बट रियलिटी क्या है? The stupa was actually a meeting point, जहां पर ये दोनों ट्रेडिशंस जो हैं आकर के इंटरसेक्ट होते थे. The cosmic mountain, an iconic representation of Buddha's parinirvana, physically housing the relics to localize divine presence. तो संघा अलग अलग रीजन्स में जाकर के स्तूपास बनाएगा, एंड स्तूपास में स्टोर क्या किया गया है? बुद्धा के रिमेन्स या रेलिक्स एटसेट्रा. टू डू व्हाट? टू ट्रांसफॉर्म दैट लोकेलिटी इनटू अ सेक्रेड जियोग्राफी इन द मैप ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, और ये कौन कर रहा है? हु इज चूजिंग द लोकेशन? इट इज द संघा इटसेल्फ दैट इज चूजिंग दिस लोकेशन. तो पहले वाला जो assumption था दैट संघा वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास, इज इट वैलिडेटेड और इनवैलिडेटेड? इनवैलिडेट हो जाता है. इट वाज डीपली इंटरेस्टेड इन इट. ठीक है, it is deeply carved with Jataka tales, past lives of the Buddha, functioned as three-dimensional graphic novels, democratizing complex theology for the unlettered laity. Who made this choice कि इस तरह का representation मिलना चाहिए कि एक ग्राफिक नॉवल बन जाए
बुद्धा के प्रीवियस लाइफ्स की स्टोरीज, उनके मिरेकल्स लोगों को स्कल्पचर के मीडियम के थ्रू पहुंच पाए. Who made this choice? It was the Sangha. Sangha was trying to spread the stories of Buddhism to a target audience which did not know how to read. तो spoken word के थ्रू एंड उसके visual representations के थ्रू. ठीक है. And finally, it dictated physical ritual movement, creating a lived bodily experience of worship that is absent in pure text. देखो, अगर केवल टेक्स्ट बेस्ड रिलीजन है तो उसका लिमिटेशन क्या होगा? It would appeal only to the literate people. 95% of the population illiterate है, तो सब्सक्राइबर बेस बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा. तो you need to start speaking in their language. They wanted this, the common people wanted this, the Sangha responded. तो दोनों के लिए एक मीटिंग पॉइंट था, and it was an instrument of religious mass communication. ठीक है. तो what idea are you getting from this? Is Sangha completely distinct from the laity, or is Sangha deeply trying to make strong outreach to the laity? Strong outreach to the laity. ठीक है. And how the Buddha was represented, that also evolved over time. तो इसका मतलब the evolution of Buddhism, is this not revealed through the study of visual sources? Yes. टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन में क्या आपको ये थीम मिलेगा? नहीं मिलता है. वहां पे डिबेट अभी भी फिलॉसफी के ऊपर ही होगा. यस, हीनयान एंड महायान बुद्धिज्म आर गोइंग टू इमर्ज, बट हाउ दे आर गोइंग टू डिफर इन प्रैक्टिस, दैट इज गोइंग टू बी मिसिंग फ्रॉम द टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन. तो फर्स्ट फेज, इट वाज द फेज ऑफ एन आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, जहां पर बुद्धा को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था. रादर ही वाज शोन ईदर थ्रू हिज footprints, Buddha Pad, or an empty seat, a riderless horse, stupa, etc. to symbolize his presence. Then एक intermediate phase आया. Some devices would be used. ये एक पीपल ट्री है, उसके नीचे एक empty throne है. एक सिंहासन है, पीपल ट्री, उसके नीचे एक राजा बैठा हुआ है. बैठने की जगह है लेकिन वो है नहीं. कौन है ये? Sakya Muni, right? Buddha, right? And then iconic representation by the postmodern age. The emergence of anthropomorphic Buddha reflects theological shift towards Mahayan ideals, a savior physically accessible for direct devotion or bhakti. Okay? So this gradual evolution is revealed through the survey of these kinds of texts. Okay? तो ये हो गया अबाउट बुद्धा. तो कई सारे assumptions थे ना हमारे पास अबाउट अर्ली बुद्धिज्म. दे आर शैटर्ड बाय द इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन विजुअल सोर्सेस. सिमिलरली गुप्ता पीरियड का रिलीजन, इसमें भी कुछ assumptions हैं हमारे. किस तरह के assumptions? दैट द गुप्ता एज वाज एन एरा ऑफ रिजिड ट्रायम्फेंट ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स रिवाइवल. ठीक है. High watermark of Brahmanical orthodoxy in India, right? However, physical artifacts they left behind, such as coins, temples, shared artisan spaces, reveal a deeply pragmatic and syncretic reality. लेकिन अगर किताबों से बाहर निकल करके आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, विजुअल सोर्सेज पर रिलाई करोगे तो कंप्लीटली डिफरेंट रियलिटी डिपिक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, the myth is that society in the Gupta age was divided into fanatic sects which were completely distinct from each other. So texts often present religious sects as isolated, competing silos, with Gupta empress exclusively championing which one? Vedic orthodoxy. ठीक है. तो यहाँ पे एक टेम्पल कल्ट है, एक बुद्धिस्ट कल्ट है, एक वैदिक ऑर्थोडॉक्सी यज्ञ कल्ट है. टेक्स्ट क्या बोलेंगे कि गुप्ता एक्सक्लूसिवली किसको पेट्रोनाइज कर रहे हैं? केवल इसको. बट रियलिटी कुछ ऐसा था. ठीक है. मटीरियल कल्चर डिमॉन्स्ट्रेट ओवरलैपिंग सेक्रेड जियोग्राफी. दैट मीन्स the same locations would be simultaneously sacred for Hindus, Jains, Vaishnavites, Saivites, as well as Buddhists. Buddhist, Jain, and early Hindu sites coexisted, flourished, and shared
the exact same artisan guilds as well. तो एक तो shared geography और shared sacred geography होगा. Secondly, are the Guptas going to discriminate against any particular community, or are they going to patronize everyone, remain tolerant towards everyone? Remain tolerant towards everyone. Yes, they may have given more attention to Brahmanism, but that does not mean that others were ignored. Then, the nature of Gupta religion. तो क्या बोला जा रहा है कि ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी का हाई वाटर मार्क है, बट वी सिंपली हैव टू लुक एट देयर कॉइनेज, एंड वहां से क्या रिवील होता है that Brahmanism itself was not all that rigid. At this point of time, it was receptive of cultural influences from other societies, other religions, other cultures. For example, आर्चर टाइप कॉइन्स में एक साइड पे किसको दिखाया गया है? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य को, एंड दूसरी साइड पे गॉडेस लक्ष्मी. इफ यू लुक एट दीज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, तो वो ट्रेडिशनल फॉर्म की लक्ष्मी नहीं दिखने वाली है, पद्म लक्ष्मी या धन लक्ष्मी. वो आपको दिखेंगी एक ग्रीक गॉडेस की तरह, राइट? तो द गॉडेस आर्डोक्सो वाज बैक्ट्रियन, और लक्ष्मी हिंदू इज सीटेड ऑन अ सीट ऑफ ऑन अ थ्रोन ऑफ ऑन अ थ्रोन और लोटस. ठीक है, तो एक साइड पे तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य होगा, दूसरी साइड पे या तो ये लेडी होंगी, ये कौन है? आर्डो शो, राइट? या दूसरी और कौन होगा? द गॉडेस लक्ष्मी होंगी. दैट मींस आर्डोक्सो एंड लक्ष्मी one and the same. Lakshmi, an Indian goddess. Ardoksho, a Greek goddess, goddess of wealth. ठीक है, the visual pairing proves that Gupta kings utilized a fluid and syncretic visual vocabulary. ठीक है, blending foreign Kushan deities with emerging Hindu iconography to legitimize rule across diverse populations. Clear? तो another assumption challenged. हाँ, ये देखो, Guptas also patronized religious complexes ना. वो सबसे फेमस वाला द उदयगिरी केव्स, कहां पर? एमपी वाला. ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के पीरियड का. व्हाट इज द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ओवर देयर? वाराह केव, राइट? एंड वहां पे बोर स्टैचू है एक बड़ा सा 9 फुट का, उसमें एक इंस्क्रिप्शन भी है, राइट? तो लेकिन इफ यू survey the entire area, you are going to discover that that is not the only cave located there. वहां पे शेवाइट केव भी प्रेजेंट है, जैन केव्स भी प्रेजेंट है वहां पर. ठीक है, इट फीचर्स द मॉन्यूमेंटल बोर अवतार वारा ऑफ विष्णु सिग्नलिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड वैष्णविज्म. Yet within the same complex, inscriptions reveal prominent Jain dedications made by Gupta state ministers. ठीक है, तो गुप्तास were giving money for this cave, लेकिन उनके मिनिस्टर्स क्या पेट्रनाइज कर रहे थे? जैन केव्स को पेट्रनाइज कर रहे थे. एंड डिड ऐसा हुआ कि गुप्ता रूलर्स ने केवल वैष्णवाइट आर्टिजन्स को पैसा दिया ये बनाने के लिए, या फिर सेम सेट ऑफ आर्टिजन्स वर इन्वॉल्वड इन द एक्सकवेशन, कंस्ट्रक्शन, रिफाइनमेंट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ केव्स? Same set of artisans were used. So stylistic analysis proves that the exact same artisan guilds carved Buddhist, Jain and Hindu icons simultaneously. The visual language of divinity was shared across sectarian lines. Irrespective of कि artisan हिंदू है या जैन है या बुद्धिस्ट है, वो हिंदू स्कल्पचर्स भी बना रहा था, बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स भी बना रहा था, जैन स्कल्पचर्स भी बना रहा था. कैसे पता हमें? सी, जैसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स हैंड राइटिंग एनालिसिस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि ये राइटिंग किसकी है, आपकी है नहीं है, वैसे ही आर्ट हिस्टोरियंस एंड अदर एक्सपर्ट्स दे लुक इनटू द चिजल मार्क्स ऑन स्कल्पचर्स, सरफेसेस जिनको पॉलिश किया गया है, एंड दे आइडेंटिफाई पर्टिकुलर ट्रेट्स विद पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ आर्टिजन्स. तो उस तरह के एक archaeological handwriting analysis करते हैं, and they discovered that same set of these artisans were involved in all different types of sculptures. Clear? तो what does this show? कि sectarian division था या फिर intermixture था? Intermixture था, right? Now in both cases
What do visual sources reveal? प्राइमरी कैनवस क्या था अर्ली बुद्धिज्म का? स्तूपास एंड रॉक कट केव्स. एंड गुप्ता रिलीजन का? गोल्ड कॉइन्स एंड अर्ली स्ट्रक्चरल टेम्पल्स. पेट्रनेज मॉडल अर्ली बुद्धिज्म में कलेक्टिव एंड डिसेंट्रलाइज्ड मर्चेंट्स एंड लेटी फंड कर रहे थे. गुप्ता पीरियड में रॉयल patronage used to dominate and dynastic legitimation was the main objective. However, along with this, elite merchants also supported construction activity. And theological shift क्या हुआ? Relic veneration and narrative teaching. ठीक है, तो from philosophy, from aniconism towards devotionalism. बुद्धिज्म में ये जर्नी देखने के लिए मिलता है. एंड गुप्ता रिलीजन में इंस्टॉलेशन ऑफ लोकलाइज्ड एंथ्रोपोमॉर्फिक डेटीज, दैट इज पुराणिक वर्शिप. तो यानी कि वैदिक वर्शिप से पुराणिक वर्शिप, वैदिक वर्शिप टुवर्ड्स भक्ति, यज्ञास टुवर्ड्स भक्ति, डिवोशनल कल्ट, टेंपल वर्शिप, ये सब इमर्ज होता है. एंड केवल टेक्स्ट पढ़ते हैं तो ये रिवील होता है दिस ट्रांजिशन? नहीं हो पाता है. एंड therefore, how should we study ancient religion? Only relying on texts या फिर using both textual sources as well as visual sources? Both textual as well as visual sources. Visual evidence does not merely supplement the textual record, it also disrupts it. Artifacts, stones and coins give voice to the laity, women, merchants and artisans who left no written manuscripts, fundamentally democratizing our understanding of ancient India. Clear? Now, a couple of questions. How have visual sources reshaped assumptions about the practice of, about early Buddhism? The second question, how have visual sources reshaped assumptions about Gupta period religion? So try and write about these two questions today. Model answer कल मैं भेजूंगा, ठीक है? Not today. So I want you to write first so that you have something to compare it against. कर लोगे? Right. Online students, yeah, I'll share the PPT. अच्छा ये बताओ, इस तरह का PPT यूजफुल लगा? मजा आया देख के? हाँ, you can write these as 15 markers. दिक्कत ये है इस तरह की PPT बनाने में ना, सोचना बहुत ज्यादा पड़ता है, because you are having to give prompts instructions to the AI. वो धीरे धीरे बीच बीच में करेक्शन वगैरह करने के लिए, फिर भी वो कुछ ना कुछ गलती कर देता है. जैसे वो आर्किटेक्चरल की स्पेलिंग पता नहीं उसने क्या गलत गलत लिख रखी है, बट दैट हैपेंस. ठीक है, पीपीटी इज हेल्पफुल, so then we are going to continue using this. And yes, अपलोड करवा दूंगा मैं. ठीक है, एनीथिंग एल्स? नहीं? चलें फिर. हमारी मुलाकात अब कब होगी? टुमारो नहीं, टुमारो आई थिंक निखिल सर इज टेकिंग दिस थिंग ना, वो मॉडर्न इंडिया शुरू कर रहे हैं. तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपका मॉडर्न इंडिया चलेगा. वील मीट वंस अगेन ऑन मंडे. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं और व्हाट एवर क्वेश्चंस एनकाउंटर इन दी पीवाईक्यूज,
उनको लिखने की कोशिश जरूर करिएगा। इफ नॉट फुल फ्लेजेड आंसर्स, एटलीस्ट स्ट्रक्चरिंग कर लीजिएगा। एंड यू रिमेंबर, मैं बताया था कि कंसेप्शन फ्लो, एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे होना चाहिए, वो मेथड अप्लाई करने की कोशिश करो। गो बैक होम एंड जिस तरह से नोट्स बनाने के लिए बोला है वो उस तरह से नोट्स भी बनाना। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।